अच्छा ये होमियोस्टैसिस कौन ना वॉइस आसुची एबे फूड चेन फूड वेब Yes, देखि sir, देथिले audible clear. अच्छा व्हाट इज होमियोस्टैसिस एनीवन that ecosystem will maintain itself or balance करे equilibrium establish करे okay done now comes to the pyramidal that is ecological pyramid now ecological pyramid that means it was given by what Elvin Elvilen Hutchison and Raymond Lindemann so this word given by Raymond Lindemann and that is Evelyn Hutchinson these two person ଦେଇଥିଲେ जोटा कि हमर इकोलॉजिकल पिरामिड ना इकोलॉजिकल पिरामिड डिफरेंट टाइप रो थाए so that is the representation between or relationship between the different living organism with different trophic level or energy level different trophic level रे ताकू प्रेजेंट करा जाए like putting one trophic level another ओके देन एक्चुअल शेप कौन था साधारणतः पिरामिड रो शेप तो तुम जानछो कौन था बुझी पड़छ तो ब्रॉड्स तार जो बेस टा ब्रॉड था एंड लो ट्रॉफिक लेवल टा ब्रॉड था एंड ऊपर टा धीरे धीरे टैपिंग हे था as the number of horizon bars increase हे था धीरे धीरे तार कोन हे था हाइट कमी जाई था है ना दैट वुड बी लाइक दैट तो ये हे जाई था ओके डन ना आको हमें देखिबा तो एबे जति हमें देखिबा इकोलॉजिकल दैट मींस द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड रे हमें देखिबा टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ओके सो टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड रे देखिबा कोन तो फर्स्ट हमें देखिबा इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ नंबर देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ बायोमास देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हमें देखिबा एनर्जी और प्रोडक्टिविटी सो फर्स्ट हमें नंबर देखिबा इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ नंबर सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स रो जति हमें पिरामिड्स रो हमें देखबा साधारणतः बेस टा ब्रॉड थाए तो एक्चुअली इट वुड बी लाइक पिरामिड्स आर लाइक दिस दे विल हैव ब्रॉड बेस एंड इट विल टैप एज वी मूव टू द ट्रॉफिक लेवल रो ऊपर गले टैप ही जाई थाए कोन में टैपिंग हे थाए बिकॉज़ ऑफ द एनर्जी धीरे धीरे कमी जाई थाए the availability of energy will reduce in each trophic level because that energy will transfer to the atmosphere in form of heat through the respiration process ठीक अच्छे रेस्पिरेशन प्रोसेस द्वारा हीट द्वारा से जो ट्रांसफॉर्म हो एंड 10% तार केते कमी जीवो 10% कमी जीवो जदि हम देखिबा नंबर पिरामिड को रिप्रेजेंट करबा तो ऑब्वियसली प्राइमरी प्रोड्यूसर नंबर अधिक थाए सबले कोन रहबो प्राइमरी प्रोड्यूसर विल हैव मोर नंबर देन एज अ प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी सो जदि हम नंबर पिरामिड रे देखबा ऑलवेज चाहे से तमरा टेरेस्ट्रियल हो or aquatic either it could be terrestrial or aquatic both रे हम देखबा the producer would be संख्या ता तांकर अधिक रहबो the primary producer जाक obviously हम कहबा कि producer ठीक अछि or autotrophs their number would be more as compared to the primary so that would be happens in both that is the tertiary and aquatic रे both रे सेया देखा जाए डन तो ये हमको देखा जो डिपेंडिंग अपॉन तो हमें देखिए पिरामिड्स ऑफ नंबर सो पिरामिड्स ऑफ नंबर रे हमें कौन देखबा दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज पॉपुलेशन एट ईच ट्रॉफिक लेवल रे हमें ताको देखिबा डिपेंडिंग अपॉन द साइज द पिरामिड्स ऑफ नंबर मे नॉट ऑलवेज बी अपराइट देखो नंबर टा केतबे अपराइट हे पारे केतबे न भी हे पारे और मे इवन कंप्लीटली इन्वर्टेड तो यूजुअली कोन हेता नंबर टा तमरो अपराइटेड थाए बट केबे केबे इन्वर्टेड मध्य हे परिबो और केबे केबे मिक्स्ड मध्य हे परिबो सो देयर वुड बी 3 दैट मींस नंबर पिरामिड तीन प्रकार हे परिबो इधर इट वुड बी अपराइट हे परिबो और इट वुड बी तमरो इन्वर्टेड हे परिबो और इट वुड बी मिक्स्ड हे परिबो तो ये तीन प्रकार हे पारे बुझबो नंबर पिरामिड फॉर एग्जांपल जदि हमें देखिबा ग्रासलैंड रे For example, we will talk about grassland pyramid, number pyramid. Obviously, the producer, primary producer, that means here would be the what? Primary producer, jakom kuch autotrophs, their number would be more. So gradually it would be tapped and the pyramid number of grassland. जदि हमें pyramid number of grassland रो देखिबा, then it would be upright. ये कौन रहबो तमरा upright? हाँ कि नहीं? Upright हबो कि नहीं? चाहे से let's say aquatic भी तम नहीं जाओ, it would be upright.
it would be upright. Aquatic ro bi jodi ame dekhwa, aquatic ro it would be upright. That would be what? Upright tomorrow rahibo, है ना? So that would be upright. Then primary consumer ये सब तुमको देखा जाबो. But जति हमें गोटे tree रो concept put करिबा, गोटे tree रे number को put करिबा, the number of, that means a tree रो संख्या गोटी, but number of birds residing here, their संख्या would be more. So they will have more numbers. So birds, let's say गोटे गछ अछि, सेथरे बहुत सारा पक्षी रहउछि. So here pyramid would be inverted because only one tree is there, but 100 birds are residing on that tree. तो ये ट्री रे सबने 100 बार्स रहउछि. So in that case it would be inverted pyramid. ना बुझा पड़िबन तुमको काकू. Okay, so number pyramid जति हमें देखिबा, in terms of a single tree it would be inverted. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pyramids number represent the total number of individual of different species रे तुमरा आसीबो. Different species is different. हमकवा trophic level. For example here, upright केतेबेल रहइबो तुमरा, inverted केतेबेल रहइबो. Here would be the mixed. Here would be mixed one. Now here you can see the number. In this pyramid, the number of individual is decreased from the lower to high trophic level. So एठी तुम देखि परिबो, the number is decreasing from the lower to high trophic level. And this one is presented by the primary producer. Primary producer. And this one is the primary consumer. This would be consumer. Then तुम्हारा सिवा secondary, then tertiary, then it would be tertiary consumer. तो obviously हमें जति देखिबा, so here the number pyramids, चाहे से grassland कथा नहीं छो, this would be तुम्हारा grassland. That represent, this one represent grassland, this one represent aquatic life. So both in grassland or terrestrial and in aquatic ecosystem जति हम देखिबा, the number pyramids are upright. तो number pyramids ता हमको कौन देखा होची, upright देखा होची. For example, phytoplanktons कथा नहीं जाओ. The phytoplanktons, they are the what? Producer or the autotrophs. Then it would be zooplankton. There would be zooplanktons. Then it would be small fish. Then it would be medium fish. Then it would be big fish. There would be like this. Okay, they would be like this. Tanu koriki. Okay, done. So it would be upright. Tanu kori ye kona rahibo tomara upright rahibo. So it would be upright. Okay, thus it would be upright rahibo. The number pyramid would be upright. Now जदि हमें number pyramid मु तुमको कहथि, for example गुटे गछर, here is a single tree, सेथरे हमें देखो that would be herbivores रहइबो, parasite रहइबो. So their number is more. Okay, so it would be inverted in a tree. Okay, now partly upright, partly तमर हेइ पारे. For example गुटे producer अछि, गुटे tree, सेथरे बहुत गुडा herbivore अछि, एथरे गुटे carnivore भी थाई पारे. So here in this case, जदि हम देखबा, it would be mixed हेइ पारे. It would be partly upright and partly, that is the what, inverted and upright, both रहिबो. So number pyramid could be three types. Either it would be upright, inverted हेइ पारे, or mixed, or partly upright, partly तमर हेइ पारे inverted. सर मिक्स्ड रो एग्जांपल माने कोठी हबो सर मिक्स्ड ट्री दिया हिची. For example, one tree is there. सेतरे बहुत गुडा तुम छोट छोट बर्ड्स होची, आंको खाया पे आउ जणे अछि, हॉक्स अछि, बुझु आर संख्या गोटी. सो इट वुड बी अगेन बेस वाइड थिला, ए बेस टा वाइड, दिस वुड बी वाइड बेस एंड दिस वुड बी नैरो. ओके, सो इन दिस केस दैट मींस गोटे ट्री केस रे हम जे देखबा, बोथ हे परबो, इधर इन्वर्टेड हे परबो और इट वुड बी मिक्स्ड हे परबो. डन. Then pyramid of biomass. So pyramid of biomass जति हमें देखिबा, अच्छा समस्त एंट्री करि पारछन ना, आ काकू प्रॉब्लम होची एंट्री करिबारे? No, sir. हे पारुछि ना? Sir, अनिता join करे करनु. Yes, sir. Join. आसे सर. Yes. हे गेला ना? Then so pyramid of biomass. ना देखो pyramid of biomass मु एठी तुमको कहि दोची, pyramid of biomass ए थिला तो तुम्हारा नंबर. Now when it comes to the pyramid of biomass, तो एठी से कहूची biomass. Now biomass two type, either it would be dry biomass or it would be wet biomass. तो generally we will consider the weight को हमें consider करो rather than the dry biomass. For example, जे तुम कहबो what is dry and what is wet.
लेट्स से हमरो फाइटोप्लैंटन्स कथा नै जाओ फाइटोप्लैंटन्स जेते फाइटोप्लैंटन्स अछि ताकू जेते हमें सुखै देबा ड्राई कर देबा ओके ड्राई कर दियो गोटे वेल थिबो तिमी माछ जाको हम वेल कहूचे ना गोटे वेल्स टू कोन तार वेट अधिक हो कि मिलियंस ऑफ फाइटोप्लैंटन्स मिसी गले भी गोटे वेल्स टू तार ड्राई वेट अधिक हबो नाही तो इन दैट केस it would be inverted it would be what that means one well equal to millions of phytoplanktons zooplanktons so their pyramid would be inverted so that means जदि हमें देखिबा it would be pyramid टा कोन हिजबो inverted हिजबो ना बुझा पड़ले नै टा काकू ओके बट जदि हमें ताकू वेट कर दबा फॉर एग्जांपल जदि हमें वेट नै है ना तो ई वेट हमें जदि वेट रे हमें कोन कले कोन हबो तो वेट रहले माइट बी अपराइट हे जे पारे फॉर एग्जांपल टेरिस्ट्रियल कथा नै जाओ टेरिस्ट्रियल ना grasses so many grasses are there तो ग्रास को जदि हमें देखिबा फॉर एग्जांपल हियर इज द टेरिस्ट्रियल ये तमरो टेरिस्ट्रियल ये जो grasses अछि ऑल ग्रास रो जदि हमें वेट ग्रास रो वेट को जदि बाहर करिबा ताले इमानकर ओजनटा याठू ऑब्वियसली अधिक हबो दैट मींस हमें कहबा जो हमारा वेट बायोमास ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम इट वुड बी ऑलवेज अपराइट हाँ कि नहीं ऑलवेज अपराइट ही रहिबो बुझि परछनी बट आमरो जदि हमें से बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम बायोमास पिरामिड इट वुड इन्वर्टेड हे इट वुड बी इन्वर्टेड हे ओके तो एटा ठीक देखि देबा ना ये देखी दिया तुम्हें दैट मीन्स इट वुड बी अपराइट इन केस ऑफ जोटा मु तुमको कहथली टेरिस्ट्रियल कांसेप्ट मु कहथली इट वुड बी अपराइट फॉर एग्जांपल जिते ग्रासेस अछि हमरो ट्रीज अछि ये सब कोन प्राइमरी प्रोड्यूसर एमन कर वेट टा ऑब्वियसली आंको वेट टू अधिक हबो आ वेट टू अधिक हबो आ वेट टू अधिक हबो दैट मीन इट वुड बी अपराइटेड बट मु तुमको कहथली एक्वाटिक रे कहथली मिलियंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन बिलियंस आसले भी गोटे वेल सहित समान हबो नाही So here what will happens the whales ro weight ta exceed kari jibo तेणु कर एठी कोन रहिबो it would be inverted that is why it would be inverted in aquatic ecosystem it would be inverted ना बुझा पड़बे एटा मीनिंग then it would be inverted the biomass would be inverted in aquatic system and but जदि हमें देखिबा in grassland कथा नै जो बा terrestrial concept रे देखिबा it would be upright done it would be upright तो नंबर को हमें देखिदेले मिक्स्ड देखिदेले ओके एंड लेस लास्ट टाइम देखिबा कोन एनर्जी लास्ट टाइम कोन देखिबा एनर्जी ना एनर्जी ये तो सबले अपराइट रहइबो दैट वुड बी ऑलवेज नाउ एठी कोन सिखिले देखो दैट मींस तमरो जो आमे कहबा जति बायोमास को हमें देखिबा दैट वुड बी टू टाइप्स हे परे ईदर इट वुड बी अपराइट हे परे और इन्वर्टेड हे परे बट एनर्जी टा ऑलवेज अपराइट एनर्जी टा कोन हबो ऑलवेज अपराइट नायर डिफरेंस बुझा पड़लानी किछि एनर्जी टा ऑलवेज अपराइट ना बुझा पड़लानी डन एनर्जी टा कोन होची ऑलवेज it would be always upright done it would be always upright energy टा always कोन रहइबो upright रहइबो सर डाउनवर्ड पिरामिड थिले inverted माने इन्वर्टेड एनर्जी रे इन्वर्टेड ही पारिबो ही नाही नो वे नो चांस only in case of number and in case of biomass both upright and inverted हे परिबो but energy pyramid रे केबे भी हे परिबोनी it would be always upright एमिति रही ओको कोन पे ना ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा पचारछि ना व्हाई बिकॉज एनर्जी सबले अधिक थाए का पाखरे ग्रीन प्रोड्यूसर पाखरे और प्राइमरी प्रोड्यूसर पाखरे ग्रेजुअली एनर्जी कमी जीवो जेहेतु आमर रेस्पिरेशन होची 10% कमिबो 10% बुझिबो जेमति एठी देखो 100 थिला देन 10% देन 1% एबे देखो केते 0.1% तो धीरे धीरे कमी गला कि नहीं हाँ कि नहीं तो 10% लेफ्ट रहिबो 10% लेफ्ट रहिबो एठी 100 थिला एठी 10 तार 1 तो दी ओनली 10% वुड बी लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पाई सो दैट सेमानकर संख्या बढ़ी पारिबो नाही बुझ परछनी दैट इज व्हाई तो जदी एनर्जी जेमति कि हमें तो एनर्जी सेथबे कहते नै सब्जी ग्रीन सब्जी खाइबो कना ग्रीन सब्जी रे तुमको अधिक एनर्जी मिलेबो रादर देन तमे जो मीट वगैरह खाउचे बुझ परछनी इट विल हैव मोर बिकॉज़ फास्ट टाइम तमे ताको कंज्यूम करूचो
So that is why it will have more energy, hence the energy will reduce 10% only left ରହିବ for the second trophic level पे ତେଣୁ କରିକି their number would be always less and energy pyramid ଟା ସବୁବେଳେ upright ରହିବ এটা always ଏଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ it would be always upright है ना it would be always upright then importance of ecological pyramid ना ecological pyramid रो importance कोन ठीक अछि importance हन कोन हमको जाना पड़िबो कि कोठी कोन अछि हां सर ताहले जो पिरामिड ऑफ नंबर्स जोटा कहले सेटा अपराइट भी हे परिबो इन्वर्टेड हे परिबो मिक्स हे परिबो तो सर मिक्स माने से जो ट्री टा जो एग्जांपल देले टिक आउट क्लियर सर कहि दियंतु मिक्स टा हम जानि नथिबे For example, here you got a tree. देखो, one tree is the producer, which is feeded upon by herbivores like number of birds, and these birds are hunted by another hawk. एठी गोटे की अछि तुमरो hawk अछि, जे ताकू feeded upon करूछि. So hawk रो संख्या कोन कम, their number here the number is more, and here the number is less. So it would be what? It would be inverted and mixed, upright, partly inverted. Okay. So that is why in that case, when it comes to the number pyramid, it would be three type. Either it would be upright hyper, or it would be inverted hyper, or partly inverted, partly upright hyper. Done? सर ठीक है सर क्लियर Significance कोन they show the feeding of different organism in different ecosystem that shows the efficiency of energy transfer केते रहउछि and the condition of ecosystem can be monitored ecosystem को हमें monitor करबा and any further damage can be prevented okay तो सेटा को हमें देखिबा the limitation of the ecological pyramid रो limitation कोन okay तो लिमिटेशन आमे जदि हम देखबा एटा तमरो मेंस पई थाए साधारणतः मेंस में पढ़िया कथा ना इथरे फिर भी हम देखते छे मोर देन वन स्पीसीज में ऑक्युपाई मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल फॉर एग्जांपल गोटे में ह्यूमन बीइंग आगु कोठी रखबा तमे सेकेंडरी बेस पर टर्शियरी बेस पर फूड्स दैट मींस हना इन केस ऑफ हमें फूड वेव्स इचु किबा ट्रॉफिक लेवल कथा नै छ दस सिस्टम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फूड वेव्स तो गुड ह्यूमन बहुत जगह रहबा फॉर एग्जांपल सापोफाइट्स they are not considered in any of the pyramid even कोठी भी हमें ताकू रखी नाही pyramid रे okay then pyramids are applicable only to simple food chains not food wave रे actually applied हो नाही किंतु जदि हमें देखबा actually nature एमिति हुए नाही कारण फूड टा गोटिए सिंपल जाने साधारणतः फूड चेन नाही सबले फूड वेव थाए नेचर रे कोन कोट एप्लीकेबल फूड वेव रादर देन द फूड चेन हो कि नहीं नेचर रे कोन फूड वेव टा मोर एप्लीकेबल देन द चेन हाँ कि नहीं ना एटा बुझा पड़िबोनी Yes, sir. बुझ पड़छ कि नहीं so nature will have more option to the food web that rather than the chain then the pyramids don't deliver any concept in relation with the variation season and climate को किछि pyramid representation दिया जायनी बा तार significance दे जाय नहीं they don't even consider the possibilities of existence of the same species at different level ताकु मध्य करे नहीं then हमें bio accumulation and bio magnification देखिबा एटा तम छाडी इतरा एथरु क्वेश्चन आसे bio accumulation and bio magnification फर्स्ट कथा ये कहा को कुआ जाय ना हियर इज देखो bio accumulation and magnification अर्थात कोन pollutant here we will talk about the pollutant it would be pollutant in trophic level pollutant food chain रे एंट्री करे then it will move through the trophic level so bioaccumulation and magnification talk about the pollutant in food chain रे pollutant को discuss करे it refers to how much pollutant enter to the food chain रे केते pollutant enter करूछ ताकू कहा जे तमरो bioaccumulation है ना concentration केते होछ अच्छा bioaccumulation and biomagnification भितर डिफरेंस कोन थाले एनीवन व्हाट इज accumulation सर वन टॉपिक बोलो नेक्स्ट जदी बड़ी जाय सेटा को मैग्निफिकेशन कहंती आ जदी Concentration chain of pollution
जो प्राइमरी पॉल्यूशन कंज्यूमर है टी जाए कंसंट्रेट हेले सेटा अक्युमुलेशन ताले बायो मैग्निफिकेशन कोन हैला सर एनीवन एक्युमुलेशन सर एक्युमुलेशन हैला माने गैदरिंग आउ मैग्निफिकेशन हैला माने कमी कमी जाए कि लास्ट को ये हबो मैग्निफाई हबो है चेन सिस्टम ऑफ पॉल्यूशन जिनमें ये वन देखो टू मोर देन टू पॉल्यूटेड ना ये देखो तुमर बायो अक्युमुलेशन रो गोटे फिगर बायो अक्युमुलेशन कोन ना प्रथम कथा बायो अक्युमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन इज टॉक अबाउट द पॉल्यूटेंट इन फूड चेन ये माने कोन व्हाट दे टॉक अबाउट pollutant in food chain so they talk about pollutant in food chain okay for example तुम देखो phytoplanktons if they will absorb like mercury यदि mercury को absorb कला then ताको किए के small fish then big fish then it will transfer to human being so that would be what accumulation that means that pollutants concentration in human body will increase so concentration of what pollutant will increase through the food chain that means from the primary producer it will now comes to the tertiary or secondary consumer आसिरे पहुंचला आर सब बेस्ट एग्जांपल हैला तमरो vulture ना इंडियन vulture सब मरी गला ना जानना vulture सब मरी Yes. गला नहीं vulture काहे की मला because of the Diclofenac. because of डाइक्लोफेनाक कोन जोटा ताको कोन पे दिया है डाइक्लोफेनाक कोन पे दिया जाए टेम्परेचर को कंट्रोल मिल्क प्रोड्यूसिंग है गोबा टेम्परेचर को कंट्रोल करिया पे दिया जाए इट्स टाइप ऑफ व्हाट हमें कहबा एंटी इन्फ्लेमेटरी हां कि नहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी तो ये जेतेबेले काउ को दिया गला का दिया गला काउ को जेतेबेले मरि गला तार जो काराकस को की खाइबो vulture ना vulture भितरे ए मेडिसिन ता धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़िला बायो अक्युमुलेशन हैला ना जेतेबेले ये मैग्निफाइड हे जो सेतले से मरचियो बुझी पड़छनी फास्ट अक्युमुलेशन हबो ताले मैग्निफिकेशन कोन ताले मैग्निफिकेशन पई कंडीशन हैला फास्ट देयर वुड बी अक्युमुलेशन हैला पर मैग्निफिकेशन हबो ताले मैग्निफिकेशन रो मीनिंग कोन सिंपल मैग्निफिकेशन रो मीनिंग हैला अच्छा हम समस्त पानी पिउचे हो कि नहीं पानी रे कोन आर्सेनिक नहीं मर्क्यूरी नहीं यूरेनियम नहीं अच्छी ना नहीं ये सब अच्छे ना these are the pollutants are there but अच्छी सर but एमाने लिमिटेड अछि जेतिकी हम बॉडी सही परिबो बा नेचर रे जेतिकी मिले सपोज नेचर रे हमें जानि छे कि 1 लीटर रे 0. केते गोटे हमको मिलुची यूरेनियम लेट्स से 0.01 दैट इज नेचुरली फाउंड दैट इज नेचुरली बट ह्यूमन द्वारा यदि सेटा 0.5 हे गेला देन दिस इज मैग्निफाइड बुझी परछन तो मैग्निफाइड कहा को कहिबा नेचर रे जेतिकी मिलुथबो ताठू जेतिकी हम बॉडी रे कंसंट्रेशन अधिक हे गेला दैट वुड बी मैग्निफाइड ना बुझा पड़ले नेबे मीनिंग कोन ओके लेट्स तो सर मोर कंसंट्रेशन हे जीवो सेटा है तो मैग्निफिकेशन टा तो सेटा तमरो कंसंट्रेशन टा बढ़ी जिवो सो दैट मींस हमें कहिबा ये कोन हबो एटा तब देखो बायो अक्युमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन सो बायो दैट इज द मैग्निफिकेशन accumulation that is accumulation कोन concentration ता धीरे धीरे बढ़ी जिवो गोटे ऑर्गेनिज्म रे बढ़ी जिवो increase in concentration of the pollutant पूरा फूड चेन रे बढ़ी जिवो जोटा कि नेचर ठू अधिक नेचर ठू लेट्स से नेचर रे हमें जानि छे यूरेनियम मिलिबा वाटर रे मिलुची 0.1 ग्राम फॉर एग्जांपल किंतु कोठी गोटे तुम यूरेनियम माइनिंग करिछ माइनिंग करबा द्वारा सेठी कोन अछि ना 0.2 तुमको मिलीग्राम सेथरे मिलुची दैट मींस एटा कोन ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा एठी बढ़ी गेला नेचर रे केते मिलुची 0.01 बुझ परछन सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन को कहै छै बायो मैग्निफिकेशन तो कंसंट्रेशन ता बढ़ी जो फूड चेन रे तो ये साधारणतः एमती ही थाए तो ग्रेजुअली प्रोसेस बढ़ी जिवो दैट मींस हमें कहबा कि जो बायो मैग्निफिकेशन हे गेले मर जिवो अक्युमुलेशन रे मरिबो नहीं बाय वंस इट वुड बी मैग्निफाइड देन देयर वुड बी डेथ तो से डेथ हे जिवो तो बायो अक्युमुलेशन इज बट टॉक्सिक केमिकल दैट मींस आपको हमें कहबा पॉल्यूटेंट Pollution हबो खाली है ना pollution खाली हबो हां दैट मींस हमें कहबा लेट्स से पॉल्यूटेंट आसीगला जाको जेमति तमर डीटीडी कहउछ पेस्टिसाइड आसीगला जेमति पेस्टिसाइड यूज कराउची टॉक्सिन हे गेला यूज इन द ह्यूमन बॉडी ईदर थ्रू द एयर फूड चेन किछि भी होची तो ये सब कोन छ बायो अक्युमुलेशन कराउची
है ना। तो तादर से तो कहूँ ऑर्गेनिक फूड खाओ, ऑर्गेनिक कल्टिवेशन करा सो दैट टू रिड्यूस द बायो अक्युमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बुझिपार बायो मैग्निफिकेशन को रोका जाओ, बायो अक्युमुलेशन को रोका जाओ। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट ग्रीन कल्टी आम कहे कौन ग्रीन मैन्योर वी आर टॉकिंग अबाउट परंपरागत कृषि योजना। As this toxic compound accumulates within the human body, it increases the risk of chronic poisoning. Cancer भी यही पर several health disorder देखा जाबो तापर डेथ हो जाबो। जेमति पे फॉर एग्जांपल ऑयल जेतबेले आमे खाउचे हमर तो नेचुरली ऑयल मिलुची फूड रे। जेमति आमे लेट्स से आमे ऑयल सीड खाउचे, आमे सकाळु छी तमे किछि गोटे वालनट नियो, जहा भी नियो तमे पिस्ता नियो, से ऑयल थाए, नेचुरली तो ऑयल थाए। कि तुम पीनट्स नियो से ऑयल थाए कि नहीं, बट दैट इज नेचुरली। किंतु आमे एडेड नौचे, आमे कौन नौचे एडेड बरा पियाजी खाईदेवा, से कौन एडेड, सो दैट से आक्युमुलेशन है बॉडी रे कौन कर आक्युमुलेट कर देन हेल्थ डिसऑर्डर करेइबो, हाँ कि नहीं बुझिपारछ तो एबे। सो दैट इज व्हाई तो कंसंट्रेशन नेचुरली रहिबा दरकार ना कि एडेड हवा दरकार। सो पॉल्यूटेंट कौन करियो फूड चेन रे वंस एंटर हैला परे कंसंट्रेशन बढ़ी बढ़ी जीवो। ताले ये को प्रकार सैचुरेटेड फैट जहाँ को हमें कौन को सैचुरेटेड फैट, और सैचुरेटेड फैट तो जीवनी, हाँ कि नहीं जीव कि सैचुरेटेड फैट तो जीवनी बॉडी रू। तो से आमको कौन करा जाए सो दैट पॉल्यूटेंट जो तुम एंटर करे फूड चेन रे ये इंक्रीज है जीव कंसंट्रेशन धीरे धीरे पॉल्यूटेंट द फास्ट ऑर्गेनिज्म इन द चेन। तो बायो अक्युमुलेशन रेफर्स द इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द फास्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन। फॉर एग्जांपल आमे फिश कथा नहीं जाओ, फिश होची फास्ट फूड चेन रो कना प्राइमरी प्रोड्यूसर होची के ग्रासेस एंड जहाँ भी रहिला फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांटन ताको फिश खाइला। देन बायो अक्युमुलेशन सब्सटेंस धीरे 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 पेस्टिसाइड भी पारे, पेस्टिसाइड दिया जाउची केमिकल ऑर्गेनिज्म रे दिया जाउची। सेति पे फॉर एग्जांपल तमे आमे जो चिकन खाउचे है ना, ये जो चिकन खाउचे एथरे कोन थाए, चिकन को कोन दिया होची कोलिस्टाइन, कोलिस्टाइन दिया होची कि नहीं ना जाना कथा। कोलिस्टाइन कोन एनीवन, ये गोटे कौन रेजिस्टेंट एंड कौन तुम जो एंटीबायोटिक टू कौन कौन रेजिस्टेंट कर दिए, तेणुक दि जाए कौन ये गोटे एंटीबायोटिकटा बुझिपार नहीं। तो से तुम देखो जो टैबलेट किनिया जाइथाओ गोटे टैबलेट जदि तुम एंटीबायोटिक किणुचे तापर गोटे रेड लाइन थाए, के देखिछ ध्यान से गोटे रेड लाइन थाए। तो से रेड लाइन रो मीनिंग होची विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यू मस्ट नॉट परचेज और इनटेक दिस टैबलेट। से कोलिस्टाइन जो थाए में एथिपाई ज्वर हेले एटलिस्ट तुम 3 दिन जाए एंटीबायोटिक खाइबा कथा नुह, 3 दिन पर एंटीबायोटिक नब। से कोविड हेले भी देखिबो डॉक्टर प्रथम 3 दिन तुमको कहिबे कि एंटीबायोटिक नियोनी तापर नब, कारण बॉडी को आगे टाइम दियो, बॉडी आगे हील करिवो, बॉडी रेस्पोंड करिया पे टाइम दियो, बॉडी को रेस्पोंड करिया पे टाइम दबोनी केमती हो। से डॉक्टर आगे एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करती नहीं, अदरवाइज तुम बॉडी रो जो इम्यूनिटी कैपेबिलिटी कमिस दिवो। तो बॉडी को आमे जो इम्यूनोथेरापी आजिकल आसुची कैंसर ट्रीटमेंट पे कौन पे सेटा इम्यूनिटी को एनहांस करबा कौन। तो जदि तुम बारंबार जदि तुम कौन कर एंटीबायोटिक नौच किसी भी हेले सो दैट तुम बॉडी रो रेजिस्टेंट बढ़ी बढ़ी जीव, तापर एंटीबायोटिक आ काम करिवो नहीं बुझिपारछ नहीं। तो सेमिति एठी कौन होची जो कोलिस्टाइन दिया होची है ना, ये जो कुकुड़ा को दिया होची तादर हम बॉडी रे ताको खाई 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 कौन होची बॉडी रेजिस्टेंट हो जाउची मेडिसिन, आ से मेडिसिन काम करिवो नहीं। सेतमी ताको बैन भी कराची चिंगुड़ी की दिया हो सर चिंगुड़ी, हाँ से से गोटे खाइबा कथा नुह एथिपे दैट इज व्हाई नेचुरली जहाँ मिलुची खाइबा कथा बुझिपारछ नहीं। सो दैट मीन्स कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़िबो, तो ताको ऑब्वियसली इट वुड बी फास्ट ट्रॉफिक लेवल रो फास्ट लेयर रे बढ़िबो, तापर सेकंड लेयर को जीवो धीरे धीरे। देन बायो अक्युमुलेशन ऑकर्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म एब्सॉर्ब करिबो सब्सटेंस एट द रेट फास्टर देन एट व्हिच सब्सटेंस लॉस्ट बाय द दैट इज कैटाबोलिज्म और एक्सक्रीशन। ऑब्वियसली बॉडी एब्जॉर्ब करिवो ताको द टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक तमरो लेट से मिथाइलिन मर्क्यूरी कथा नहीं छो बॉडीज को एंट्री करिवो, जेमति तमरो डीटीटी कथा नहीं छो है ना, ये सब तो कोठी एग्रीकल्चर यूज होछ कि नहीं डीटीटी। ओके दे आर वाटर सेलेबल थाए एंड एफिनिटी टू द बॉडी लिपिड्स रे एंट्री करी जीवो, तेणु करके एमान को ये सब पीएम 2.5 कथा नहीं छो है ना, 10 कथा नहीं छो, ये तो बहुत टॉक्सिक, दीज आर द टॉक्सिक एलिमेंट, दे आर आल्सो एंटरिंग इनटू द ऑर्गेनिज्म, हाँ कि नहीं एमाने भी डेंजर, ये भी कौन आक्युमुलेशन कराउची ता द्वारा लंग्स प्रॉब्लम होची, हाँ कि नहीं। तो ये सब सिचुएशन दीज आर द आक्युमुलेशन रे हमको देखा जीवो ना। बायो अक्युमुलेशन तुम देखिथबो धीरे धीरे केमती होची, हाउ इट इज शिफ्टिंग टू द ह्यूमन एंड द ट्रॉफिक लेवल रे केमती धीरे धीरे बढ़ुची। देन कम्स टू बायो मैग्निफिकेशन ना, जेतेबेले कंसंट्रेशन अधिक हबो ताकू कहजो मैग्निफाइड।
Biomagnification or the biological magnificence is the process of accumulation of the certain chemical living organism to a concentration higher than occurring in the our inorganic or non-living environment. ମୁଁ ଯୋଉଟା ତମକୁ କହିଲି environment ରେ ଯୋଉ level ରେ ମିଳୁଛି ତାଠୁ ଯଦି ଆମ body ରେ concentration ଅଧିକ ହେଲା that means magnified. सेम पॉल्यूटेंट देखो कौन सी जिनस प्योर नहीं फॉर एग्जांपल मु वाटर कहली से मर्क्यूरी अच्छी से यूरेनियम अच्छी बट दैट इज कंज्यूमेबल दैट वुड बी कंज्यूम सेटा तुम बॉडी को हार्म करिवो नहीं बट जदि से कंसंट्रेशन अधिक हेगला तो जदि हम बॉडी रे कंसंट्रेशन ताठू अधिक हेगला देन तापर सेटा डेथ को नहीं कि जीवो आ किछि नहीं दैट मींस हमें मैग्निफिकेशन को हम कोन कहबा सिंपल राइज और इंक्रीज इन द कंटामिनेटेड सब्सटेंस इन द बॉडी इनवर्ट इंटॉक्सिकेटिंग एनवायरनमेंट रे देखा छ साधारणतः है ना सो कंटामिनेट्स माइट बी हेवी मेटल्स हे परे जेमति तमर मर्क्यूरी हे परे अच्छा तमे जानछ आगु सीएफएल बोल थिला हां कि नहीं ताकू रिप्लेस किए गला एलईडी एलईडी काहे कि सीएफएल को तले रिप्लेस कला एडी बिकॉज़ ऑफ मर्क्यूरी बिकॉज़ ऑफ व्हाट सीएफएल बॉल जो ता भीतर धोला धोला थाए सेटा होछि मर्क्यूरी आ से मर्क्यूरी को जेतलो तमे से बॉल को फिंगी दउछो कोठी भी डिस्पोज करूछो इफ दैट इज नॉट प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड से मर्क्यूरीटा कोन हला लेट से पानी को जीवो से पानी रे पोखरी को जीवो से माछो खाइबो पुनी ह्यूमन बॉडी को आसीबो सेमते आर्सेनिक कथा पेस्टिसाइड कथा नहीं छ है ना तो ये डीडीटी कथा नहीं छ तो ये सब ह्यूमन बॉडी को आसीबो थ्रू द एग्रीकल्चर दैट मींस एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करिबा फिश को बा आमे कहबा प्राइमरी प्रोडक्ट को जेमति ताई से फॉर एग्जांपल फिश हे परे एग्रीकल्चर हे परे वेजिटेबल्स हे परे हॉर्टिकल्चर इट शुड बी सस्टेनेबल हवा दरकार कंटामिनेंट्स फ्री हवा दरकार पॉल्यूटेंट फ्री हवा दरकार अननेसेसरी आमे कहबा मेडिसिन यूज करिया कथा नुह प्लांट रे ना बायो मैग्निफिकेशन केते बेले हबो एबे कोनसी सब्सटेंस रो बा पॉल्यूटेंट रो कंसंट्रेशन मैग्निफाइड हबो ना कंसंट्रेशन बढ़िबो केतेले बढ़िबो जेतेले तार लॉन्जिविटी अधिक रहबो नल द ह्यूमन तार कोन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज रे खत्म कर देबो ताकू हां कि नहीं न बुझा पड़िबो सो इट मस्ट बी कंडीशन कोन फॉर द मैग्निफिकेशन इट वुड बी लॉन्ग लिव्ड मोबाइल हवा दरकार जदी मोबाइल न हबो फॉर एग्जांपल फिश रु ह्यूमन को आसी परिबोनी से खत्म हे जो सो इट शुड बी मोबाइल सोलेबल इन फैट आ कोन से जिंस फैट सोलेबल हेले इजीली से आसी परिबो and biologically active so these are the four conditions to become the biomagnification otherwise ये खाली accumulate ही की रही जो खत्म ही जो करना से कौन कहे जो तारो concentration बढ़िबो नहीं बुझिबो सेते में long lived होबो mobile fat soluble and biological active होबा दरकार ना causes of biomagnification मु तुमको ऑलरेडी कहि देछि एग्रीकल्चर होछि कारण एग्रीकल्चर वेरी टॉक्सिक हमें देखिबो लोक माने आजिकली बहुत मतलब different type of pesticide fungicide herbicide insecticide है ना fertilizer use कराउछि they are not sustainable that is why we are talking about sustainable agriculture और परंपरागत कृषि योजना है ना एथरे तमर कैडमियम थाई परे लीड थाई परे कॉपर थाई परे मर्क्यूरी थाई परे आर्सेनिक तो आपको केमते में कमेइबा एबे बुझि परछो ना ऑर्गेनिक कंटामिनेट्स भी थाई परे ना ये तो तुम्हारा एग्रीकल्चर था सेमती तुम्हारा आजकल एक्वाकल्चर फिश जो चुंगड़ी चाष होची श्रिम्प कल्टीवेशन सेतरे भी आसुची फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी आसुची मैन्युअर कथा नहीं छो बायोसॉलिड्स कथा नहीं छो तो ये सब तुम्हारा आसुची एनवायरनमेंट रो थ्रू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एग्रीकल्चर द्वारा आसुची ये सब रो आसुची इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी आसुची माइनिंग जोटा मु तुमको आउटी पूर्व कहतली तो जिंक है जे एल्युमिनियम है जो कोबाल्ट गोल्ड मर्क्यूरी भी सेतरा आसुची यूरेनियम आसुची माइनिंग द्वारा भी होची इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल तुमरो थर्मल कोल प्लांट कथा नहीं छ सेतरु भी आसुची पॉल्यूटेंट ओके आदर कोन ह्यूमन ऊपर भी पॉसिबल इंपैक्ट पड़िबो सब ऊपर एनवायरनमेंट ऊपर ऑन एन एवरेज आई वुड से एनवायरनमेंट ऊपर पड़िबो तापर खत्म हो जिवो कोन डन biomagnification and bioaccumulation now it would be particular organism ये पूरा food chain को व्यापी छिबो an organism a food chain को पूरा affect करिबो two given trophics biomagnification take place in two different ये कोन only गोटे ट्रॉफिक लेवल रे कन्फाइंड है कि रहिबो जेमति मु कहली अदरवाइज बायोमैग्निफिकेशन अपन कंडीशन कोन दरकार लॉन्ग लिव्ड मोबाइल फैट सॉल्यूशन फैट सॉल्युबल हवा दरकार एंड एक्टिव रहबा दरकार बायोलॉजिकल एक्टिव सो दैट इट कैन स्प्रेड टू द ऑल ट्रॉफिक लेवल कुछ अदरवाइज गोटे ट्रॉफिक लेवल रे कन्फाइंड है कि रहि जबो माके नहीं जेमति कि मर्क्यूरी इन फिश ठीक अछि माइक्रोस्कोपी एक्वाटिक ये पूरा तुमरो होल सिस्टम को अफेक्ट करिवो दैट वुड बी द डिफरेंस तुमको जदी पचारे देन बायो इंटरेक्शन
ओके ये भी आसबे तुम बायो इंटरेक्शन अच्छा बायो एक्युमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन में बुझी परिबो Yes, sir. ना Yes, कौन sir. बायो इंटरेक्शन ना इंटरेक्शन रो फास्ट तुम देखि देत गोटे अछि तुमरो बायोटिक इंटरेक्शन गोटे अछि अबायोटिक इंटरेक्शन अबायोटिक तो ऑब्वियसली तुम जानछो डज नॉट हैव लाइफ एंड हियर वुड बी द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वुड बी ए माइंड दैट वुड बी ए माइक्रो और ए मेसो सो बायोटिक इंटरेक्शन मीन्स व्हाट कारण गोटे ऑर्गेनिज्म एका बंची पारिबो नहीं इट नीड टू व्हाट लिविंग टुगेदर ओके फॉर एग्जांपल हियर वी विल go through this one now o अर्थात कोन so some type of interaction listed that means एठी देखियो ना bio interaction रे कोन होई either that means it would be तमे देखो इंट्रा स्पीसीज हेई पारे इंटर स्पीसीज हेई पारे bio interaction let's say two birds same birds or a birds and a animal एमथि भी हेई पारे so that would be cross either it would be intra or inter बुझा पड़िबो एबे है ना now सेथरे कोन हबो in the bio interaction either it would be beneficial harmful or neutral हेई पारे सर सर इंट्रा हेले दीटा सेम हबो जदि इंट्रा हेला सेम हां इंटर हेले अलगा इंटर हेले डिफरेंट ठीक अछि इट वुड बी डिफरेंट जेमति कहने इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट विद इन एंड Inter डिफरेंट sir इट वुड within बी bodhe. हां Inter टा इंट्राटा एटा विद इन तो जे इंट्राटा होची विद इन आ इंटरटा हेला अमंग और बिटवीन एटा तुम कहबो इधर यू मे से बिटवीन और अमंग बुझ परछ इधर तुमको अमंग कहबो और बिटवीन कहबो इंट्राटा ओके सर इंटर जोटा हैला और इंट्राटा होची विद इन एटा होची विद इन ओके दैट वुड बी विद इन एटा हला तमरो विद इन एटा हला बिटवीन और अमंग एबे हम देखबा तो बायो इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल हे पर सम स्पीसीज जदि सेम स्पीसीज जोटा हम कहली विद इन तांको भितर एटा हम कहली सिंपल विद इन तांको भितर कहले सेम स्पीसीज एटा डिफरेंट स्पीसीज मु सेट में कहली बिटवीन और अमंग बहुत मतलब डिफरेंट आसी छै है ना इट वुड बी सेम इट वुड बी सेम इट वुड बी डिफरेंट जेम तुम कहली ना इंटर स्टेट डिफरेंट स्टेट इंट्रा स्टेट कहले गोटिए बुझि परछन तो ये रहबो ना जेतले बायोटिक इंटरेक्शन होची बायोटिक इंटरेक्शन कहले टू लाइफ्स लेट्स से गोटे स्मॉल फिश आ गोटे लार्ज फिश आ गोटे लार्ज फिश देयर वुड बी इंटरेक्शन जेमते गोटे गाई चरुची बिलर देखो ता चारि पटे बहुत गुडा बग भी चरु थाए दैट इज व्हाट इंटरेस्ट है ना स्पीसीज इंटरेक्शन बाय स्पेसिफिक इंटरेक्शन हां कि नहीं लेट्स से टू काउस दैट वुड बी इंटर यस है ना नाउ लेट्स से तुमको पचार छबो ए गोटे गाई चरुची आ गाई चारि पाखे देखो बग बने थाए ना व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन व्हाट काइंड ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन ये whether it is mutual benefits वे ना जणे बेनिफिट पाउची आ जणे किछि होनी कोन होची whether it is Jone benefit pauchi. whether it is minus minus or plus minus or 0 plus Plus minus. or Zero minus plus जीरो कोन आबो जीरो प्लस it सर could be कमेंट से it could be 0 plus it Zero could be Zero. 0 plus Zero बुझ पतने 0 अर्थात कोन किछि नै नो इफेक्ट एबे देखो गाईटा चरुची ना काउ व्हिच इज गैजिंग तारो ता साइड रे जो अछि तमरो कॉमन स्टॉक जा कमी कुछ जो पखीटा बुलुची ये काउ ऊपर किछि प्रेशर पकाउ नै काउर किछि जाउनी तार ना नेगेटिव ना पॉजिटिव जीरो इफेक्ट नो इफेक्ट बट बेनिफिट किए नउची that bird is taking benefit that means तार कोन बेनिफिशियल so it would be 0 plus it would be 0 plus हां कि नहीं ना बुझा पड़िबोनी बार्ड रो कोन बेनिफिट होची ना जेतेबेले काउटा चरुची घास कहउची घास रे लुचि कि थिबा इंसेक्ट्स दे विल कम आउट एंड ही विल कैच बुझि परछन दैट बर्ड्स विल कैच इट तो तादर से बेनिफिट पाउ सेति पई से बसुचे एमते नै कि टिंको खाइबो बोली बसिनी अच्छा केबे केबे तुम देखिछ घुसुरी की जो बनवा घुसुरी जा को हम कहछे कोन बोर वाइल्ड बोर देखिछ ना वाइल्ड बोर को से आसी सोई जीवो हैला आ जेते नेउल अछि ता ऊपर आसी चढ़ी की ता देह को सफा कर दिए देखिछ ना केबे नहीं सर देखी ना ये भी अछि तो देयर बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटिंग से भी बेनिफिट पाउची ए भी बेनिफिट दैट मीन प्लस प्लस इट वुड बी प्लस प्लस तो प्लस रे कोन दी जण बेनिफिट पाइबे नेगेटिव रे जणे क्षति हेबो आ हैला नो इम्पैक्ट एबे बुझा पड़िबो आ मूव्स ऑन बायो इंटरेक्शन ना बायो रो गोटे पॉजिटिव अछि गोटे हैला नेगेटिव पॉजिटिव रे म्यूचुअलिज्म कमेंशियलिज्म आवश्यक तमर प्रोटो दैट इज व्हाट कोऑपरेशन एमेंशियलिज्म parasitism predation cannibalism competition तेणु हमको
कंपटीशन करबार नहीं कोऑपरेशन करबार अछि बुझिपारछन है ना। तो सेदिन पुरुषोत्तम सार कहते कि जदि नोट फोट लुचा लुची करिवो बुझिपारथिबो Yes. सो कोऑपरेशन है ना कॉन्फ्लिक्ट करिवो नहीं मतलब ओनली कोऑपरेशन। तो जा भी हो ताले भी हमें जीवा पॉजिटिव सम देयर वुड बी पॉजिटिव इंटरेक्शन सम नेगेटिव इंटरेक्शन एबे गोटे गोटे देखिबा हमें ना। फास्ट हमें देखा म्यूचुअलिज्म कहले कोन बोथ बेनिफिट ताले प्लस प्लस। कमेंसलिज्म जने बेनिफिट पाउची आ जने के किछि इंपैक्ट पड़ो नहीं। प्रोटो कोऑपरेशन प्लस प्लस ओके दैट इज कोऑपरेशन बा कोऑपरेशन माने दी जण बेनिफिट पाइबे ना। कंपटीशन रो उल्टा ताले कंपटीशन कोन yes दी जण कर नेगेटिव है ना। कैनिबलिज्म रे कोन जने खाई की बंचिबो आ जने मरचिबो एठी कोन सर जने नेगेटिव आ जने पॉजिटिव। सर प्रोटो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म टा टिके माने डिफरेंस टा कोन ता भितर कहते एबे जीवा आगु को देखिबा प्रेडेशन एबे देखो प्रेडेशन रे कोन जने आ जने को मारी की खाइबो। कैनिबलिज्म रे सेया तो ऑब्वियसली जने नेगेटिव रहबो जने पॉजिटिव रहबो। पैरासिटिज्म जेंति गोटे गछ ऊपर आ गोटे देखिबो लता गुडा चढ़ी जाईची तो से बेनिफिट पाउची गछटा मरुची हां कि नहीं। दैट मींस Yes. पैरासिटिज्म प्रेडिशन कैनिबलिज्म है ना ये होची जने बेनिफिट आ जने पाइबो नहीं बट कंपटीशन रे दी जने नेगेटिव। तो एमती तुम पचारिबो कि इन व्हिच ऑफ द बायोटिक इंटरेक्शन both the species are going to harm that is the competition. In which of the biotic interaction only one species will benefit another would be neutral. So that is amensalism. That is what sorry it would be what commensalism. It would be commensalism. सर कमेंशियलिज्म रो दी जण प्लस पा कहीं की commensalism mutualism रे बा mutual interest ना या पूर्वटा टिके स्लाइड टिके करियो पूर्व स्लाइड ए तो कमेंशियलिज्म रो अछि प्लस पॉजिटिव इंटरेक्शन हाँ मु केतल नेगेटिव कहली मु बा तुमको कहूची आ जने बेनिफिट तार लॉस भी होनी लाभ भी और एठी होनी बोथ स्पेसिस हां ठीक है सर बुझिपारछन न्यूट्रल रहला से ना म्यूचुअलिज्म होची सिम्बायोटिक रिलेशन जेमति कि तमरो कोरल्स एंड जुजन थला एल्जी एटा के एल्जी ए दी जण ए एल्जी कोन करे ता पई कोन करे एल्जी कोन करे फूड बनाए आ कोरल्स ता पई कोन करे शेल्टर Shelter. तो दी जण सिम्बायोटिक रिलेशन दैट वुड बी सिम्बायोटिक रिलेशन ना ना एतसेते भी माने सिम्बायोटिक रिलेशन करी कि थाए। अच्छा बुझो अनदर सिमिलर एग्जांपल होची सिंस इन द पॉलिनेशन जेमति तोरो महुमाछी आ फूल दी जण बेनिफिट पाउची ये भी बेनिफिट से भी बेनिफिट नहले पॉलिनेशन हबो नहीं हबो कि हबो नहीं ताकू भी महु मिलुची तो बोथ आर बेनिफिटेड सो दैट इज आल्सो म्यूचुअलिज्म हां कि नहीं दैट वुड बी आल्सो म्यूचुअलिज्म बोथ आर बेनिफिटेड। देन कमेंशियलिज्म मु जेमति तंकु ये बग कथा कहउतिला टिके पूर्वरु गोटे गाय चरुची है ना एंड ये ता पाखर अछि सो वन वुड बी पॉजिटिव वन वुड बी जीरो बा तापर किछि नेगेटिव इंपैक्ट पडू नाही डन ठीक अछि ना हियर हमें आ गोटे देखिबा फॉर एग्जांपल एठी कमेंशियलिज्म द बरीज ए जे तुम देखु छै माने कोली गुडा कैरिड बाय द एनिमल्स हु हेल्प्स टू स्कैटर द सीड फॉर द पेरेंट प्लांट ए तो जाउछि ता द्वारा ये बेनिफिट तार किछि क्षति होनी ता देह रे जाउछि लागि की पड़ौछि है ना तापर पड़ी जाउछि गछ तार होछि तो गछर कोन होछि बेनिफिट होछि तार किछि बेनिफिट होनी। एथरे देखो ये गोटे बड़ माछ ता पेट तळ अच्छा जेतल तुम देखि जो वेल जेतल बुलले ता पेट तळ छोट छोट माछ गुडा थाए जेतल सार्क थाए सार्क किंबा बड़ बड़ वेल्स थाए ता तळे कोन कहे सकर फिश थाए सो दैट एनिमी माने आको पाक या तळे तळ छोट छोट फिश गुडा थाए या तळे सब लुचि की थाए सो दैट कारण ये तो खाई परिबनी प्लस आ पाखु भी आउ के आसीबनी पे ताकू खाया पी सो दैट दे वुड बी बेनिफिटेड द दैट इज व्हाट रिमोरा ए सकर फिश लिव क्लोज एसोसिएटेड विथ द सार्क एंड अदर लार्ज फिश सो दैट बाकी माने केही ताकू हंट करिया पी आसीबे नाही दैट वुड बी बेनिफिट ना बुझा पड़बे इट वुड बी आर जीरो इंपैक्ट तार प्लस स्मॉल फिश ता डन दैट इज कमेंशियलिज्म। देन प्रोटो कोऑपरेशन ना कोऑपरेशन रो मीनिंग कोन कहितले मु तुमको प्लस प्लस कोन प्लस प्लस प्रोटो कोऑपरेशन रे इंटरेक्शन रहबो टू दी जण बेनिफिट पाइबे ना इथरे कोन होबो देखिबा फॉर डिफरेंट किंगडम बट एठी कोन लिखा छै देखो डिफरेंट किंगडम रो माने गोटे एनिमल गोटे बर्ड सही परे और आ गोटे तमर कोन हे परे फ्लोरा गोटे फौना दीटा डिफरेंट किंगडम रो ही गेला हां कि नहीं डिफरेंट किंगडम रो गोटे बर्ड्स किंगडम रो ही परे गोटे एनिमल किंगडम रो ही परे किंबा गोटे प्लांट किंगडम रो ही परे ना बुझा पड़बनी। Yes, sir. For example,
एठी लिखा है एग्जांपल ऑफ द फोटो कॉपरेशन हैपेंस बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ ए प्लांट दैट आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट ये तो इंसेक्ट रु आसिला ये तो फ्लावर रु आसिला दीटा डिफरेंट किंगडम रु आसिला बुझी पछन दीटा डिफरेंट किंगडम रु आसिला तो दैट इज द डिफरेंस बुझी पछन तो ये डिफरेंट किंगडम रु आसिबो फोटो कॉपरेशन देन आसबा अमेंशियलिज्म नेगेटिव इंटरैक्शन अमेंशियलिज्म रे कोन सर माने म्यूचुअलिज्म टा माने माने गोटे ही किंगडम माने इंट्रा किंगडम म्यूचुअलिज्म रे कोन होई थाए कि किंगडम टा सेम थाई पारे एथरे सेम रे साधारणतः हम देखो बहुत स्पीसीज थाए बट किंगडम टा तमरो सेम हेई पारे बुझि परछन जेमति हम देखिले फॉर एग्जांपल है ना बुझि परछन सेम है बट सेठी कोन रहबो They are complementary to each other. हाँ एथरे कोन रहबो केवल डिफरेंट रहबो एथरे किंतु देखो सेथरे ये जदि हम कहबा फॉर एग्जांपल सेथरे से बंची पारिबो नाही बट हियर चांसेस अच्छी बंचीबार फोटो कॉपरेशन रो चांसेस अच्छी बंची जीवो हाँ प्रोडक्टिविटी कमी जीवो बट बंची जीवो किंतु सेठी चांसेस नहीं मर जीवो डायरेक्ट चलिए सो अमेंशियलिज्म रे कोन हबो जणे बेनिफिट पाइबो और अच्छा एक मिनट टिके ना अमेंशियलिज्म एथरे कोन हबो फॉर एग्जांपल तमे देखा ये कोन होची एठी एल्गी तार कोन करची निजर एरिया को ग्रो करी करी जाउची बुझि बछ फीस तार खत्म ये बेनिफिट पाउची सो वन स्पीसीज हार्म और रेस्ट्रिक्टेड अदर स्पीसीज आना हमें कहबा विदाउट इटसेल्फ बीइंग एडवर्स अफेक्टेड और हार्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज दैट इज 0 and माइनस तो एथरे फॉर एग्जांपल हम देखबा alga bloom can lead to the death of many species and however algae don't benefited from the death of the आमे कहबा सर डेथ थ्रू algae रो किछि बेनिफिट होउनी से खाली मारी दउची बुझि बछ नै तो दैट मींस जनकर नेगेटिव हैला बट आर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव आर 0 देखो algae तो कोन कला माछु मार देला बट माछु मरियो तार आर किछि बेनिफिट हैला कि हेनी ना किछि हैला कि दैट मींस 0 सो algae पई कोन 0 फिश पई नेगेटिव फिश पई नेगेटिव सो दैट इज द अमेंशियलिज्म है ना एटा टिके कंफ्यूज हे जबो अमेंशियलिज्म आ कमेंशियलिज्म भितरे कंफ्यूज हे जबो बुझि परछने सो लाइक एलिफेंट देख एलिफेंट रो किछि बेनिफिट होउनी किंतु ये जो बटे जाउची तार जो पाद पडिबा तारा बहुत जिंस खत्म हे जाउची बट एलिफेंट पई किछि बेनिफिट होउनी देन पैरासिटिज्म फॉर एग्जांपल तुम जानछो छोटो पिला को पेट रे कोन होय से जो केंचुआ होय जाओ कोचे है ना ता द्वारा कोन होय से तार बेनिफिट पाउची किंतु पिलाटा तार धीरे धीरे रोगना ही जाउची हां कि नहीं so that means that is the parasitism that है ना one species is harmed and other benefited हबो so पिलाटा पे नेगेटिव ता पे पॉजिटिव है ना parasitism involves तो ये तारा स्मॉल ऑर्गेनिज्म थाए ह्यूमन बॉडी रे भी थाए बुझि परछ नै ये भी तमर गोटे पैरासाइट मशा कथा नै जो मलेरिया तुमको हबो से तार बेनिफिट बुझि परछ नै ये एमती देखा जाय दैट मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेडेशन तो जानछि से तो ताबू खाइबो ता प्रे ओ बुझि परछ नै प्रेडेटर ये हला तुम्हारा प्रे दिस वन इज द प्रे लेट्स से लायन ये कथन इज लायन प्रेडेटर एंड दिस वुड बी द प्रे लेट्स से फॉर एग्जांपल गोट दैट वुड बी द प्रे जस्ट दैट वुड बी द प्रे है ना देन हम देखबा कैनिबलिज्म नेक्स्ट आसबा हम देखबा कैनिबलिज्म अच्छा कैनिबलिज्म तो जानछे ए भी सेम तो कोन खाइबो कोन कंपटीशन तो जानछो कोन कहबी है ना डन सो दीज आर द ये थिला तमरो बायोटिक इंटरेक्शन एबे हे जो बायोटिक इंटरेक्शन ताले हमें कोन पढिले मते कहि दियो ताले now we have gone through the trophic level pyramids different type of pyramids we have gone through the different type of pyramids so like the pyramids of number pyramids of energy pyramids of biomass so these are the pyramids we have gone through apart from that we have gone through bioaccumulation biomagnification then biotic interaction and through प्रत्येक वर्ष प्राय तुमको क्वेश्चन आसे जहां में पढ़िले हां कि नहीं अच्छा यदि मु तुमको पचारेबी कि which of the following would be a partly inverted partly upright pyramid whether it is biomass
number or energy? Number. What would be the weight? The answer is no. What would be the weight biomass pyramid of aquatic ecosystem? ऑप्शन सर दो ना Inverted sir. Inverter. Invert. इन्वर्टेड It would be upright. ये कौन रहू? Upright. मु जोटा तुमको कही सेटा ड्राई सेटा होची तमरो ड्राईटा इन्वर्टेड हबो बट वेटटा अपराइट हबो केमती देखो तमे दिमाग टिके लगैलनी वेटटा तळुक रहइबो हाँ हाँ हाँ, सर ठीक सर है वेट सर ठीक तळुक है रहइबो तळुक रहइबो बुझी पारथो तो एबे यस सर यस सर now comes to the aquatic ecosystem एबे aquatic ecosystem देखिबा obviously aquatic ecosystem could be divided into fresh water and marine water तमे आउ गोटी चाहिले भी करि परिबो कोन कहथि से दिन estuaries obviously estuary कोन बुझैतली तले estuaries are the land part true or false नहीं sir, मीटिंग false. पॉइंट ऑफ मीटिंग पॉइंट वाटर एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ लैंड एंड वाटर लैंड का था डेल्टा था लैंड डेल्टा so it could be Completely fresh water water body ହେଇପାରେ in the meeting point of fresh water and saline water. so that means it could be brackish water मु तुम कहथली और marine Yes. water equal or Brackish that could be water. saline water है ना aquatic ecosystem रे कोन थाए फ्रेश Newtons चुप रुहो it would be Newton, periphyton, plankton, necton, benthos ये कौन आगे हमें कह दो तो aquatic ecosystem रे these are the organism the organism classified on the basis of their zone of occurrence let's say गोटे pond अछि for example this one is a pond ना pond रे कोन करे or lake there would be जदि हम देखिया water रे जदि here is the तमरो sun it is sun now the electromagnetic waves which is coming तो आपको हमें कौन करिबा that means first होबे तमरो fatigue zone that would be fatigue zone और जोटा तमरो light entry करूछि है ना तो आपको हमें कौन कहबा fatigue zone aphatic zone कौन कहबा जोठी light पहुंची पारु नहीं तो that means it would be obviously हमें कौन कहबा dark it would be dark zone हमें कहबा okay नहीं fatigue and aphatic now fatigue and aphatic depends on what कौन जिनस को डिपेंड करे फर्स्ट इट वुड बी डेप्थ Permissibility of light, sunlight, heat. फर्स्ट इट वुड बी व्हाट डेप्थ देन तमरा आसबो कोन टर्बिडिटी देन इट वुड बी टर्बिडिटी Yes. ओके देन इट वुड बी फॉर एग्जांपल हमें कहबा इंटेंसिटी एज वेल इंटेंसिटी ऑफ सन रेज सेटा भी तो नहीं हेबो ना नहीं हेबो इंटेंसिटी को भी नहीं परिबा यस Yes. so this would be all so that means intensity ही परे turbidity ही परे depth ही परे okay so these are the factors of the हमें जहाँ को कहबा जहाँ बेसिस रे fatigue zone को डिसाइड करा जाए अच्छा turbidity तो जानि छ जहाँ को हम कहछे pollutant बा गोलिया पानी तो जेतले महानदी रे मानसून आसे तो मानसून टाइम रे there would be turbidity would be more hence हमें कहबा so turbidity of the fatigue zone is not static the fatigue zone also what mobile it also mobile in nature because let's say sometimes at the some point of season of the year the water will remain clear like monsoon time it will have more muddy water and the turbidity will increase so that is also from point to time or the season to season vary करिथाय aphatic zone जोठी लाइट पहुंची पारे नहीं so aphatic zone रो जो हमें कहबा productivity the productivity of this zone would be less productivity less થાય but when it comes to the fatigue zone the productivity would be more so there would be productivity टा कोन रहबो it would be more productivity in the fatigue zone done everyone हा कि नहीं more productivity तो एबे हमें Yes. देखिबा now these are the classification done on the basis of what their occurrence को नेकी तो न्यूटन कोन जे पूरा सरफेस रे थाए surface let's say this would be the water body on the surface very surface रे पूरा surface रे था they are the Newton periphyton कोन periphytons remain unattached sorry stem and root leaves for example मु देखेउ छी तुमको अच्छा तमे देखो घास फास ही थाए है ना घास
रे लागी कि आउ किसी ऑर्गेनिज्म थाए है ना घासटा हूँ गोटे रूटेड प्लांट ता देहरे आउ किसी ऑर्गेनिज्म अटैच होकी थाए दैट इज द पेरीफाइटल है ना आउ प्लांटम तो तुम जान ओबियसली माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जमती कि एल्गी डायटम है ना प्रोटोजोआ सो है ना तो दीज आर द व्हाट दे आर द प्लांटन्स देन आस नेक्टन जो माने स्विमर जमती तुम फिश हो गला क्राब्स हो गला दे आर व्हाट नेक्टन्स बेन्थस तो जान जमी तुम स्लग्स होगा गेंडा फेंडा ये जहाँ जोटा कि बटम रही है जम को कहुए बेन्थस ना ये आउ किसी डाउट अच्छी कह एनीवन नो सर डन तो ए भितर क्वेश्चन कोटा आसे तुमको कह जू प्लांटन इज ए नेक्टन और नॉट देखो एलजी इज ए नेक्टन और नॉट नॉट इज व्हाट नॉट कारण एलजी बा माइक्रोस्कोपिक प्लांट गोटे प्लांटा केमती मोबाइल करके पड़ेब से केमती नेक्टन रो मीनिंग होची जो माने निजे जहाँ को कहा जाए लोकोमोटर अर्थात से निजे निजको मूव करके नहीं पारिबो बुझिपारछनी गोटे माछटा निजे जाई परिबनी जाई परिबो स्विम करके किंतु गोटे फाइटोप्लांटन्सटा जाई परिबो कि ना जाई बुझिपारछन गोटे एल्जीटा जाई परिबो कि से माने कहा पर डिपेंड करिवो ओशन करेंट ऊपर ओशन करेंट जुआडे जिवर से माने सियाडे जिवे बुझिपारछन सो दे आर नॉट नेक्टन सो लार्जेस्ट नेक्टन दुनिया की वेल ब्लू वेल तले लार्जेस्ट नेक्टन की हैला तमर ब्लू वेल स्मॉलेस्ट की हैला लाइक द स्मॉल फिश और जू प्लांटन बुझिपारछन ना भी बुझा पड़िबनी डन एबे तमे आकु लिंक करिवो कोठी कहलो कोल्ड करेंट वार्म करेंट एथि पई जोठी ओशन करेंट दीटा मीट करिते फिशिंग ग्राउंड्स फिशिंग ग्राउंड एथि पई हुए बिकॉज ए माने लोकोमोटिव नुह दैट इज व्हाई ओशन करेंट पर डिपेंड करे जेतलो कोल्ड और वार्म करेंट मिसी जाए तो एथि फाइटोप्लैंटन्स रो ग्रोथ बढ़ी जाए सेति में फिशेस रो संख्या बढ़ी जाए बुझी परिबो एबे काहे की देन आमे देखियो प्रोडक्टिविटी तो लिमिटेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी आपको सिस्टम ऑलरेडी मु कहि देछि ना मु तुमको कहितली कि फटिक जोन रे प्रोडक्टिविटी टा अधिक होइते एफोटिक रे कम होइते बिकॉज ऑफ द सनलाइट सो सनलाइट ऑक्सीजन दे आर द डिटरमिनेंट फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एक्वाटिक हैबिटेंट्स सनलाइट बहुत जरूरी अदरवाइज फोटोसिंथेसिस होई परिबो नाही तण करी कि ता पे पेनिट्रेशन दरकार और आई वुड से इट वुड बी व्हाट पेनिट्रेट्स ऑफ सनलाइट रहिबा दरकार एंड दैट डिपेंड्स ऑन द मु तुमको कहिछि है ना को फैक्टर्स सो सनलाइट र बिना प्रेजेंस रे फोटोसिंथेसिस होई परिबो नाही दैट विल व्हाट लिमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम देन कम्स टू द डिसॉल्व ऑक्सीजन मध्य दरकार विदाउट ऑक्सीजन एंड सनलाइट तो ये किछि होई परिबो नहीं हेल्दी होई परिबो नहीं जति पई तुमको ऑक्सीजन मध्य दरकार ओके ना डिसॉल्व ऑक्सीजन कुआडू आसे ना तुमको डिसॉल्व ऑक्सीजन कोठू आसे डिसॉल्व ऑक्सीजन आसे तुमरो दीटा सोर्सेस रो one would be photosynthesis one would be from the atmosphere तो through the what diffusion of atmospheric oxygen into the water kana jetolo air ta si water रे टच करूची ता द्वारा किछि ऑक्सीजन कोन तमरो डिफ्यूज हे थाय वाटर रे डिफ्यूजन हे थाय आउ जो तमरो जेमति कि तमरो सी ग्रास हे गेला दे आर आल्सो डूइंग फोटोसिंथेसिस एल्गी कथा नै छो सो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स through their photosynthesis they are also dissolving the oxygen into the aquatic ecosystem so there is the two source of aquatic oxygen one is photosynthesis one is water air interference or that is the what diffusion now बुझा पड़िबो ने काकू डन टेम्परेचर also important factor टेम्परेचर बेसी अधिक हेले भी तमरो ऑक्सीजन कमी जबो वाटर रे पूरा कमी गले भी ऑक्सीजन कमी जबो वाटर रे सो मीडियम टेम्परेचर होची बेस्ट वार्म वाटर विल हैव मोर डिकम्पोजर कारण टेम्परेचर बढ़ी गले डिकम्पोजिशन अधिक हबो सेथि पई खरा दिन देखो पोखरी गुडा पची जाय दुर्गंध हुए एथि पई टेम्परेचर बढ़ी जाय तो फाइटोप्लैंटन्स दैट मींस डिकम्पोजर मानकर कंसंट्रेशन बढ़ी जबो बुझिबो छने और शीत दिन से मन तो मर जिवे so that is your temperature so that means normal temperature ta best है ना when dissolved oxygen fall below 3 to 5 ppm many organism will die so that means हमें कहबा तो 8 कम होबा ठीक नुह तले केते रहबा दरकार 8 ppm केते रहबा दरकार 8 ppm 5 to 8 ppm रहबा दरकार ओके तो ये ऑक्सीजन केमती आसुची इकोसिस्टम को बुझी परिबो दैट इज द एक्वाटिक इकोसिस्टम को वन इज द एटमॉस्फेयर एयर टू इज फोटोसिंथेसिस डन एवरीवन
now comes to the Yes, sir. font and अच्छा आपको हमें देखिए font देखिए देउची अच्छा लिटोराल जोन तो जानी छ लिम्नेटिक एंड प्रोफाउंडन जोन कोन से गोटे पॉइंट को हमें जेतले भाग करबा लिटोराल जोन कहले बुझी परियो समस्ते लेट्स से गोटे पॉइंट लिटोराल अर्थात जो तमरो कूलो को लागी की पूरा कूलो को लागी की जो जोन था दैट इज कॉल्ड एज द लिटोराल जोन द जोन जाको हम कहछ लिटोराल जोन इज अटैच पूरा अटैच है की थाए लिमिटिंग हैला तमरो नियर सरफेस ओपन वाटर दिस वुड बी सर गोटे जो बेनिफिक जोन थाए गोटे बेंटिक टा तळे पूरा रही फ्लोर रे ओ पूरा बॉटम रे पूरा बॉटम हैला सेट हैला तमरो बॉटम रे सो देन प्रोफाउंडल जोन होची डीप जोन लेक रो प्रोफाउंडल जोन सर कोल्ड वाटर सर ଟିକେ ଗୋଟେ डाउट ଅଛି सर लिटोरल जोन टा माने खाली सलाइन वाटर रे थाए ना फ्रेश वाटर रे भी थाए सब वाटर रे लेक रे रहइबो पॉन्ड रहइबो ओशन रे रहइबो लिटोरल रा मीनिंग हैला भाबो गोटे पॉन्ड गोटे पोखरी अछि पोखरी साइड रे कोन थाए डेप्थ ऑफ द वाटर वुड बी लेस हाँ कि नहीं आगे पानी कम थाए आगे सेठी जो सेही जो जोन टा को कहजे लिटोरल जोन धीरे धीरे गले तुमको डेप्थ बढ़िबो बुझ बछन देन आसबो तुमरो ठीक है बेंथिक जोन बेंथिक टा होची पूरा बॉटम पूरा डीप पार्ट पूरा जाको बॉटम पार्ट कोचे ता ऊपर रहबो प्रोफाउंडल जोठी कोल्ड वाटर रहबो ता ऊपर रहबो तुमरो लिम्नेटिक ऊपर रहबो है ना लिम्नेटिक जोन एंड लिटोरल जोन टा साइड रे पूरा साइड टा को कहजे लिटोरल जोन अच्छा ये ओलिगोट्रॉफिक मु पढ़े यूट्रॉफिक पढ़े मेजोट्रॉफिक ऑलरेडी पढ़े की रखी है ना तेणु करके मु जाऊ नहीं आगे नहीं पढ़ाई कि नहीं को यस अच्छा मते को मेजोट्रॉफिक ताले का कहबा व्हिच लेक तो लेक्स आर कॉल्ड एज द मेजोट्रॉफिक लेक्स एनी एग्जांपल यू आर हैविंग मेजोट्रॉफिक लेक्स हमें का कहबा ना चिलिका को गोटे कोन कहबा ओलिगोट्रॉफिक मेजोट्रॉफिक यूट्रॉफिक कोन कहबा मेजर ट्रॉफिक सर सर यू it would be मेजो मेजोट्रॉफिक है ना अच्छा तुमको जदि कहबो पैंगोंग सोलोइक और सोमोरिरी आपको हमें कौन कहबा सोमोरिरी लेक लद्दाख आपको कौन कहबे ओलिगोट्रॉफिक लेक ठीक कोन ओलिगोट्रॉफिक लेक ओलिगो अर्थात कौन कहतली लेस न्यूट्रिएंट मेजो हैला मीडियम न्यूट्रिएंट यूट्रॉफिक मीडियम हैला more nutrient so that means the water bodies are divided on the basis of availability of nutrient to that particular ecosystem so eutrophication is a process process ध्यान से मत it's a what process eutrophied is a condition जेतरो तमे कहछो ना eutrophied lake it's a what condition eutrophication is process eutrophied is a condition and बुझि परछने जेतरो हम कहछि eutrophic on the basis of nutrition that means eutrophication होची गोटे process it's a what well nourished कहले आमे कहबा बहुत सारा आप पकरे अछि तो eutrophic means well nourished जोटा म तुमको कहतली कि अधिक nutrient availability is more ता द्वारा कोन हबो eutrophication हबो eutrophication हले pollution बढ़िबो नाइट्रेट बढ़ले फॉस्फेट बढ़िले आयरन बढ़िले कोन हबो ए जो बढ़िले eutrophication हबो न eutrophication कोन पई हुए म फटाफट कहि देउची फॉर एग्जांपल दिस वन यूट्रोफिकेशन कौन पे हुए ना यूट्रोफिकेशन ये तुम देखते हो यूट्रोफाइड लेक ताले आपको कौन कहबे यूट्रोफाइड हां कि नहीं इला तुम्हारा यूट्रोफाइड है ना ये केमिति हैला बिकॉज़ दिस एक्वाटिक वाटर बॉडी हैज रिसीव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम दिस थ्रू द रन ऑफ ए केमिति छी रन ऑफ है कि आसी छी रन ऑफ है कि जेते तुमरो ऑर्गेनिक कंपाउंड सब आसी कि वाटर बॉडी रे पड़ी छी सो दैट ए जे तुम देखुचो algae bloom ହେଇଛି ଏଟା कोन ହେଇଛି तमरो alga ता भा जहा को मैं कहूचे alga bloom जहा को मैं कोन कहूचे alga bloom स्पीकर ऑफ करो कार ऑन अछि जहा को मैं कहूचे alga bloom so this alga bloom ହେଇଛି that is the eutrophied this condition is what eutrophied then why because extra nutrients supplied to the water body through the runoff now runoff कोन पे हैला might be through the water बुझि बचने through the water ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇଛି now that is why what will happens once the lake would be eutrophied the BOD ର demand ଟା बढ़ि ଯିବ कोन ହେଇଯିବ so biological dissolved oxygen ର concentration or that means I would say the BOD ର demand टा बढ़ि ଯିବ हां कि नहीं the demand would be increase कोन पे because organic compound बढ़ि गला ताकू डिकम्पोज करया पे की आसीबो बैक्टीरिया आसीबो ना बैक्टीरिया आसले कोन करिवो जो ऑक्सीजन वाटर रे डिसॉल्व ऑक्सीजन थिला
ताकू ये बैक्टीरिया डिप्लीट कर दबो so that amount of oxygen would be left to the fish, it would be very less other aquatic organism by fish and other aquatic organism. Hence this condition is called as what? Eutrophied condition, and BOD would be high. ना भी बुझा पड़लानी काहू ना काहू बुझा पड़लानी anyone मुको कहली since there would be more runoff, more than runoff, more organic compound to that ecosystem, and so that what will happens, bacteria ଆସିଯିବେ bacteria ଆସିବ ନା bacteria କ'ଣ କରିବ ତାର bacteria କ'ଣ କରିବ ତାର biological activities ତ through its by decomposition ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା decomposition से करिवो ना decomposition जेतल से करिवो ता पई कोन दरकार से रेस्पिरेशन करिवो ता पई ऑक्सीजन दरकार से ऑक्सीजन नहीं गला तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन थला सेटा डिप्लीट हैला ना फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म पई रहिबो नहीं सो दैट BOD रा कंसंट्रेशन ता हाई ना भी बुझा पड़लन काकू बुझियला सर ना इफेक्ट तो तुम जान अलगा ब्लूम कहती छी अलगी संख्या बहुत बढ़ी जो ताकू कहचे अलगा ब्लूम है जो है ना ग्रीन येलो से बहुत प्रकार अलगी देखा जो फिश सब मरी के सफा हो कोन हो सो ना व्हेन द dissolved oxygen content decreases many fish and insect माने can't survive एसो मरी के खत्म हो इट्स वुड बी डेड एरिया एज अ रिजल्ट डेड हो अलगा ब्लूम से हो ना स्पीसीज सब मरचो खाली तुमको देखा जो सेठी अलगा बुझ परसन हादर कोन हो fish and various aquatic organism die on large scale. The water have a bad taste, odor है colorless, इतर दुर्गंध बाहरिबो ये सब तुमको आसीजो that would be now wetland ecosystem. Now wetland ecosystem जंती तमरा mangrove को गोटे इकोटोन कहा जाय then तमरो what we also called is आमे को estuary भी मध्ये में कुछ इकोटोन आउ का इकोटोन कहबा anyone how many ecotons are there anyone प्लेटू भी होगा सर सर नहीं सर तो लैंड रे तारे कोन हबो one would be grassland फास्ट हबो तमरा इकोटोन रे grassland mangrove estuary हला तल के हला estuary mangrove grassland these are ecotons and these are what ecotons बुझ परछ नहीं and grassland ता ecotone कोन पई कहबा because desert and का भीतर अछि से forest फॉरेस्ट के मझे ग्रासलैंड तो इट्स ए व्हाट इकोटोन हां कि नहीं एगोडी इकोटोन गेला डन तो इकोटोन तमरो तीनटा गोटेला कोन कहली मु ग्रासलैंड गोटेला मैनग्रोव आ गोटेला एस्टुअरी डन तली इकोटोन सर प्लेटू होबो ना नहीं सर जे हिल आ प्लेन भीतर जोडा रहउची तो भाई हिल आ प्लेन तो दीटा मॉर्फोलॉजी दे आर द टॉपोग्राफी ये कोन टॉपोग्राफी इकोसिस्टम केमथि हैला सर तो किछि लिविंग ऑर्गेनिज्म थिबे ना सर सेठी भी तो गुटे ताल तमे बायोम भी फॉर्म तो ही करिवो सेटा डिफरेंट बायोम नै जाई परिबो बुझि पड़तना सेटा होचे ट्रांजिशन जोन बट माउंटेन एंड प्लेटू दे आर द लैंड फॉर्म बुझि पड़तना लैंड फॉर्म को हम इकोसिस्टम रे पुट करि परिबा नाही डन अच्छा ठीक है सर ताले मैंग्रोव हेजबो तमरो अच्छा इकोटोन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ये भी तुमको कहैथिला कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन मो तुमको कहथि प्रथम ये होची गोटे ट्रांजिशन जोन एठी नंबर अधिक रहइबो कार नंबर स्पीसीज रो नंबर सो हियर वुड बी मोर Species diversity. नंबर Species. कोन रहइबो डाइवर्सिटी मध्य अधिक रहइबो आउ कोन रहइबो इट वुड बी रिच रहइबो ताले स्पीसीज richness कोन रहइबो स्पीसीज richness अधिक रही है ना the species रो diversity and richness both would be more इकोटोन रे ठीक अछि so these are the हमें देखिबा ना हमें आसबो वेटलैंड इकोसिस्टम ए भी बुझि परछ ना केमति तो एमिति तुमको शॉर्ट नोट बने थेला शॉर्ट नोट एबे भी तुम क्लास कोला भीतर भी नोट बनै दो एटलीस्ट आराम से हिजबो तुम जहाँ जहाँ पढ़ुचे जेमति इकोटोन वो इकोटोन केते पावर अछि तो सेठी तो गोटे पिला मिस्टेक कर दबो ग्रासलैंड को से भाबिबोनी कि एटा हबो बोली इकोटोन हां कि नहीं मिस्टेक हेई थांता कि नहीं ऑनेस्टली को हेई थांता कि नहीं
ହଁ ସାର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। yes sir ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମିଷ୍ଟେକ୍ ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସି ତମେ ଦେଖିବ କି ମୁଁ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିକି ଆସିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପେନଫୁଲ୍ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆସିଲାନି ତ ଦିସ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଲିମରେ ପାସ୍ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ କମ୍ କର जोटा सिली मिस्टेक थाए ना ताकू रिड्यूस कर आपने आप हो किसी बड़ कथा नुह 8,000 पिला कुआडे जिवे बुझिपारे नहीं तो आराम से हो तुम बस सिली मिस्टेक को कमे दियो आउ ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन करिवो माइंड रे किसी प्री रिक्विजिट कंडीशन नहीं कि जीवनी कि मते 100टा क्वेश्चन करियार अछि कि कहबो मु 70टा करियार अछि ऑन द स्पॉट डिसाइड कर जति कि आसुची कर सेति के कट ऑफ हो जिवो हमें डरी के अधिक कर देला नेगेटिव हो जिवो पुणी ओवर कॉन्फिडेंस है कि जदि पुणी कहबो ना 50टा तो कर देछि हे जिवो सेटा भी खराब तो जहाँ गोटे माने मिडिल पाथ नहीं कि कर कि पूरा अधिक भी कर दोन पूरा कम भी करबानी बुझिपारछन कैलकुलेटेड रिस्क जहाँ को कहाचे सेटा नबो सब बेस्ट आराम से हो तो एबे हमें आसी जवा दैट मींस एते तुमको कहली वेटलैंड कथा कहथले ना कि देखो वेटलैंड कहा को कहाचे जमती तुम्हार चिलिका ये गोटे वेटलैंड बुझिपारछन ताले वेटलैंड किए किए जाउछि देखो टोटल वेटलैंड कंट्री रो 18.4% को आसुछि एथरे किए आसुछि देखो ये सालाइन आसीबो टेम्पररी वेटलैंड आसी परे सेमी एरिड रीजन आसी परे कोस्टल वेटलैंड आसी परे जेमति कि लागून बैकवाटर एस्टुअरी मैंग्रोव्स कोरल रीफ swamp they are coming under wetland definition that is why this is important kana ये तुमको पचारिबो कि एथरे एस्टुअरी आसुछि कि नहीं वेटलैंड रे मैंग्रोव आसुछि कि नहीं कोरल रीफ आसुछि कि नहीं स्वाम्प आसुछि कि नहीं लगून आसुछि कि नहीं लेक आसुछि कि नहीं वाटर बैकवाटर जमती चिलिका बैकवाटर ये आसुयो कि नहीं दैट्स अ भेम्बनाट लेक कथा नहीं जो अष्टमुडी कथा नहीं जो दे आर आल्सो कमिंग है ना ये तुमरा ही परिबो सो दीस आर द व्हाट कमिंग अंडर द वेटलैंड रो डेफिनेशन अंडर रे आसुछि तो वेटलैंड गोटे नेचुरल ही परे और आर्टिफिशियल ही परे ओके लेट्स से तुम ये नेचुरल हीराकुद को तुम अच्छे अच्छी अच्छी वाटर अधिक ना से तक वेटलैंड कहबो नाही वाटर डेप्थ केते अधिक न हवा दरकार 9 मीटर रु 6 मीटर सॉरी 6 मीटर रु अधिक न हवा दरकार वाटर यदि अधिक होछि त वेटलैंड कहबा नाही है ना तो फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल ता तो बे ऑफ बंगाल भी गोटे वेटलैंड हे बुझि छै तो ये वेटलैंड एमति नै कि वर्ष सारा 6 वाट वर्ष सारा पानी न रहले भी चलिबो स्पिरियडिकली हेले भी चलिबो डन आर्टिफिशियल वेटलैंड कोन राइस फील्ड कोन तमरो राइस फील्ड आर्टिफिशियल वेटलैंड किछि समय पे हबो धान चाष हो तो आर्टिफिशियल वेटलैंड ये सब जा भी इंपोर्टेंस कोन वेटलैंड को कोन कहै छै जान किडनी ऑफ अर्थ आपन कोन कहै छै किडनी ऑफ अर्थ कहीं की बिकॉज ऑफ रिसाइकल कराए किडनी रकम कोन रिसाइकल करिवो सो वेटलैंड को कोन कहै छै किडनी ऑफ द अर्थ बिकॉज ये रिसाइकल करिवो बुझि परछन कोन न्यूट्रिएंट को बाकी तार निजर डाइवर्सिटी अच्छी फॉर एग्जांपल चिलिका तार निजर डाइवर्सिटी अच्छी से फूड दउची से हमको सर्विसेज दउची से न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करूची से मिटिगेट करूची पॉल्यूशन को मिटिगेट करूची बहुत सारा तार अच्छी प्यूरिफिकेशन से करूची फिल्ट्रेशन करूची सेडिमेंट करूची न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सरफेस वाटर को ये करूची ग्राउंड वाटर रिचार्ज करूची स्टेबलाइजेशन करूची लोकल क्लाइमेट को बेनिफिट दउची रिसाइक्लिंग करूची तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म बूस्ट कराइबो चिलिका को मन पकईदेव जहाँ लिखिबो सब ठीक इकोसिस्टम दैट मीन्स फॉर एग्जांपल भाव तुमको सर केमिति न्यूट्रिएंट होला आल्सो दैट मीन्स गोटे इकोसिस्टम को दीटा जिनस दिए गोटे दिए तुमको गुड्स प्लस सर्विसेस ना तुमको सर गुड्स कौन गुड्स होची फॉर एग्जांपल फिश से तुमको दउची क्रैब चिलिका चुंगुडी है ना श्रीम कथा नहीं जाओ श्रीम दीज आर द गुड्स सर्विसेस कौन वाटर दीज आर द गुड सर्विसेस कौन जमते कि प्यूरिफिकेशन करूची एटा सर्विसेस फिल्ट्रेशन करूची सर्विसेस क्लाइमेट को स्टेबलाइज करूची सर्विसेस रिसाइक्लिंग करूची सर्विसेस ग्राउंड वाटर रिचार्ज करूची सर्विसेस स्टेबलाइजेशन ऑफ द क्लाइमेट कना आखा पाखा एरिया कूल रहिबो तो दीज आर द सर्विसेस दैट मीन्स द वेटलैंड प्रोवाइडेड बोथ आमे कहबा गुड्स एंड सर्विसेस ना बुझा पड़िबो नेबे काहू डन तो ये रहबो तमरो वेटलैंड ना एबे तुमको क्वेश्चन से पचारिबो कि तमरो जो वेटलैंड अछि इंडिया रो को पार्ट रो अधिक वेटलैंड अछि फॉर एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन मोड पचारे कि व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया विल हैव मोर वेटलैंड ईस्टर्न साइड उत्तर प्रदेश ईस्टर्न सर obviously it would be eastern India okay नहीं ईस्टर्न इंडिया यस तो ये तुमको देखा जो तले वेटलैंड रे बाय द सॉल्ट पैन फॉर एग्जांपल तुमको कहै कि सॉल्ट पैन्स आर कमिंग अंडर द wetland definition or not yes सर
Yes. Yes, sir. ଏବେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏଟାକୁ ଏବେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆର ଷ୍ଟାଟସଟା ଆଗରୁ मतलब शायद prior to 2017 what I can remember it used to be in the definition of the salt pan are coming under the wetland definition but now it's removed कारण remove न कले ना कारण जेहेतु कोनोसी जिंस जेतरो wetland declare हेजो तार कंजर्वेशन हबो तो सेठी तो लुण मारी Yes. परिबो ना तमे लुण मारी परिबो कि तो सॉल्ट आउ तो मारी परिबोनी सो ता सॉल्ट रो प्रोडक्शन कमी गेले प्राइस बढ़ी जिवो तेणु करी ताको हटै दैछंती मोर जहा जति कि मने पडुची बाकी तमे टिके चेक कर दो हैला रामसार ये तो रामसार तो समस्ते जानछो कोन कहबा को पढेबी ना पढाया पडियो पुनी Sir, ଟିକେ overlook କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ठीक अछि ए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ना कन्वेंशन और प्रोटोकॉल भितर डिफरेंस कोन कन्वेंशन प्रोटोकॉल Protocol is a way to reach at that particular aim. देखो ट्रिटी टा होची साधारणतः लीगली बाइंडिंग थाए कन्वेंशन न थाए प्रोटोकॉल हैला कोन टू अचीव द टारगेट कन्वेंशन रे टारगेट निया जाए प्रोटोकॉल द्वारा ताको अचीव करा जाए बुझिबे प्रोटोकॉल द्वारा ताको अचीव करा जाए फॉर एग्जांपल बाय कन्वेंशन मतलब कन्वेंशन अर्थात कोन वन प्रैक्टिस आर मीनिंग होची प्रैक्टिस आर मीनिंग कोन प्रैक्टिस लेट्स से बाय कन्वेंशन चीफ मिनिस्टर सीएम जेतोड भी दिल्ली जो पीएम को मीट करिवो बाय कन्वेंशन प्रैक्टिस है कि अछि आज पर्यंत चली अच्छा जेते बेले सीएम जिबे बा पीएम जदि तमर आसीबो और लेट्स से प्रेसिडेंट आसुंती ओडिसा को प्रेसिडेंट जदि ओडिसा को आसे के इधर गवर्नर नले सीएम जाई कि तांको रिसीव करबे एयरपोर्ट रे कन्वेंशन या हां कि नहीं कन्वेंशन किंतु प्रोटोकॉल कोन हुए प्रोटोकॉल हैला सेफ्टी प्रोटोकॉल कोन रहिबो के रहिबा दरकार के न रहिबा दरकार सिंपल आमे Whole agenda. बुझ पड़छनी Rule. प्रोटोकॉल बुझ पड़छनी दैट इज द कोन नहीं हमर प्रोटोकॉल अछि मु सेटा आपन को देखि परिबे नहीं बुझ पड़छनी तो नाउ दैट मींस वेटलैंड कंजर्वेशन कोन अछि ये गोटे कन्वेंशन ओके एथरे कोन करा जे वेटलैंड को कंजर्व करा छ कोठी आस्ता ऑब्वियसली जान्छ रामसर इज द ईस्टर्न सिटी ऑफ ईरान इन द 1971 2nd फेब्रुअरी आस्ता मोर वेटलैंड कंजर्वेशन डे मध्य हमको करा जाय ते कोन आस्ता दैट मींस आमे केते 170 कंट्रीज ऑलरेडी एथरे रैटिफाइड करिसंती वाइज यूज ऑफ वेटलैंड सिंपल तमरो रामसर कन्वेंशन टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ये गोटे एमिति वर्ड जोठी लिखिबो चलिबो कंजर्वेशन करो सस्टेनेबल यूज करो काकू वेटलैंड जाको हम को वाइज यूज रो मीनिंग कोन वाइज यूज रो मीनिंग सस्टेनेबल यूज आउ कोन हां कि नहीं दैट मींस द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड सती ओके डन ना बुझा पड़िबनी नाउ आ पई कोन अछि जो रामसर साइट तुम जानिछो रामसर दैट इज द वेटलैंड कंजर्वेशन आ पे कोन मॉन्ट्रेक्स अछि कोन अछि एतरे मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड मध्ये अछि तो रामसर साइट ओडिसा रे केतेटा रामसर साइट अछि एनीवन हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन ओडिसा इफ यू कुड रिमेंबर କିଛି ନାହିଁ सर चिलिका थिला रिमूव हो जाइछे ने सर मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड रा पहले रामसर साइट ओके सर तीन साइट्स आर देयर ये सर चारटा बोधे सर चिलिका सुपर भितरकनिका पाइनी हम सुपर तो पाइनी ताले तमर भीतर कनिका एंड चिलिका थियो बुझि परछ ना सो बी ये सर अंशुपा पाइছে सर अच्छे सर अंशुपा पाइछि अच्छा। रामसर साइट हाँ अंशुपा 2021 रे हिची सर अंशुपा रामसर साइट के टोटल 6टा ओडिसा रे 6टा हाँ सर ମୋ ସାତକୋଶିଆ का ସବୁ सर ହେଇଥିଲା 6 ହଁ 7-6 total. हां सर 7 को ହେଇଥିଲା ठीक 7 को ହେଇଥିଲା सर बुझि पानी ओडिसा रे 7टा असंभव कथा कहते तमने मते नहीं सर 7 को ହେଇଥିଲା अंशुपा भी ହେଇଥିଲା ସେ ସାର୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା ତ 6ଟା ଏବେ 6ଟା ଅଛି ହାଏଷ୍ଟ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି ସर ତାମିଲନାଡୁର 14 ଅଛି ତାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 11 ଅଛି କିନ୍ତୁ अंशुपा ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଡ୍ ହେଇଛି मेरे कहीं ऐड करले मु भी जानि पनी कोन अछि सेठी
ଅକ୍ସବୋର୍ଡ ଲେକ୍ ବୋଲି ସାର୍। ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି ସାର୍। କୋଉଠି ଦେଖିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଉ। ହୀରାକୁଦକୁ ଆଡ୍ କରିଛି ସାତକୋଶିଆ ହଁ ତାମ୍ପରା। ସାର୍ ହୀରାକୁଦ ବି ଅଛି। ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ବି ସାର୍ ଅଛି ଆଡ୍ ହେଇଛି। ତାମ୍ପରା ବି ଲେକ୍। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ତାମ୍ପରା ବି ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ହଉ ତାହେଲେ ତମର ତାମ୍ପରା ହେଇଛି ସାତକୋଶିଆ ହୀରାକୁଦ ଚିଲିକା। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବା କାହିଁକିନା ଇଏ ତମ ପଛରେ ଅଂଶୁପା। ହଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ହବା କଥା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ମୋଦିଜି ଅଛି ହବ ଛାଡ଼ ତମେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ୁ। ସାର୍ ସେଟା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖଉଛି ରାମସର 3ଟା। ସେଇଆ ମତେ କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗେ କଣ 6ଟା କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦେଖିଦବ ତମେ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆରେ ଇଏ ଅଂଶୁପାକୁ ନାଇଁ କୌଣସି ସାର୍ ଆଙ୍ଗେଲ ନୁହେଁ ସାର୍ ତିନିଟା ତମ୍ପଡ଼ା ଆଉ ଚିଲିକା ଭିତରକନିକା ପ୍ରପର ରାମସର ସାଇଟ୍ ସେଗୁଡାକ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଆ ମୁଁ ନାଇଁ କହିଲି ନାଇଁ କେମିତି ମୁଁ ତ ସେଇଆ ବିଲିଭ ହଉନି ମତେ 6ଟା କେମିତି ହେଲା କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ସେ କଲେ ରାମସର ସାଇଡ୍ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି। ନା ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଦବ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମତେ ଦେଖ 3ଟା ମତେ ପ୍ରପର ରାମସର। କୌଣସି ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଲାଗୁନି କି ଅଂଶୁପା ଗୋଟେ ରାମସର ସାଇଟ୍ ହବ କାରଣ ରାମସର ସାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ହବ କହିଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ये ଚିଲିକା ତମେ ଅଂଶୁପା କଥା ନେଇଛ କି ସାତକୋଶିଆ ଦେ ଆର୍ ଦ ଇଦର ସେମାନେ ଯାଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭଲକୁ ଯିବେ ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଦରକାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିନି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡେଟା ବଟ୍ ମୋର ନଲେଜ କହୁଛି ଇଏ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ସାର୍ ପେପରରେ ବି ଦେଇଥିଲା ସାର୍ ପେପରରେ। ଆରେ ଭାଇ ସେଇଟା ମାରିକି ଦେଖ ବାଇଜୁରେ ବି ଦେଖଉଛି ସେଇଟା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ ମାରିକି ଆସିବ ତାପରେ ଆଉ ନଥିବ ଏବେଠୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଯାଅ। ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ତମର ଠିକ୍ ଖରାପରେ ଅଛି କହୁନି। ନାଇଁ ଦେଖ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୁଗଲ କରି ଦେଖିଦେଲି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି with the addition of 3 new wetland Odisha has 6 wetland ସେଟା ଲେଖା ହେଇନି 6 ତମ ରାମସର ସାଇଟ୍ ତ ଲେଖା ହେଇନି 6 wetland ସେଇଟା। ସେଇ କଥା ରାମସର ସାଇଟ୍ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଠି ବି କିଛି ହଲଚଲ ହବା ଦରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସାର୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଏମିତି କିଛି କନସର୍ନ ଆସିବା ଦରକାର ନହେଲେ ରାମସର ସାଇଟ୍ କୁ ଘୁଷ କିନା ରାମସର ସାଇଟ୍ ପୁରେଇବେନି। ବି 6 ଦେଖଉଛି। ଆମର ଅଛି ଓ 9 ତମର ସେ ଦିଟା ବାକି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବ ମୋ ମତରେ ଦିଟା ହିଁ ହବ ଭିତରକନିକା ନାଇଁ ଆଉ ସାର୍ ସିକ୍ସ ଚିଲି ସିକ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିକ୍ସ ସାର୍ ଆରେ 6 ଅଂଶୁପା ଆଡ୍ ହବନି ହେଇଛି 2022 ରେ ସାର୍। ହବନି ଆଚ୍ଛା ଓପିଏସସି ଅସମ୍ଭବଟା ଯେତେବେଳେ ହବନି ନେଗେଟିଭ କରିଦବ ଛାଡି ଦିଅ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ କହିଦେଲି ବା ଓ ସେଟା କଣ ହବନି ହବ କଣ ନ କରିବ OPSC ସେଇଟା ଦେଖିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେପରରେ ବି ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ନ୍ୟୁଜ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହଉ ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଫେୟାର୍ସ କାମ କରିବ ହଉ ଜାଣିପାରିବ ତମେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର 2022 ସେ ସାର୍ ପେପରଟା ଷ୍ଟଡି ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡା ସବୁ ଆସିଥିଲା। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛ 6ଟା ଅଛି ସେ ପେପର ଇମେଜ କାଲି ମତେ ପଠେଇବ। ପେପର ଇମେଜ ନାହିଁ ସାର୍ ସେ ତ ସାର୍ କେବେଠୁ ଏତେ ହେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦର 2 ନ୍ୟୁଜର ବର୍ଷ ତଳେ ପେପର ଇମେଜ କୋଉଠୁ ଆସିବ? 2 ବର୍ଷ ତଳର ସାର୍ ଏଇଟା ଅଂଶୁପା ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଶୁଣ ଅଂଶୁପା ଗୋଟେ କଥା ହଉ କରିପାରିବା ସାର୍ ଥାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ରାମସାର ର ଯାଇକି କୋଉ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରି ବଢିଆ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଖିଦବା ବେଷ୍ଟ। ଆକୁ ତ ବଢିଆ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ଆଉ ଆମ ଡାଉଟ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବଢିଆ ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବାନି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡେଟାକୁ ନେଇକି ଏଥିରେ କିଛି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ବଟ୍ ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ସିନା ସେ ପେପର ପଢିନି କି ମାଇଟ୍ ବି ଏମିତି ନାହିଁ କି ପଢିନି ଭୁଲି ଯାଇଥିବି ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ କୁହେ ତାର କନସେପ୍ଟ ଅଛି କି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାମସର ସାଇଟ୍ ହବ ସେଇଟା ଆଗେ ଜାଣିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଲଜିକ କାରଣ ତାମ୍ପାରା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲେକ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାର ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭଲ ବାଇ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭଲ ଯାଇ ନେଇ ହେବ କହିଲେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ 3ଟା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ରାମସାରର ଷ୍ଟାଟସ ଦିଆଯିବ ନାଇଁ ବି ବୁଝାପଡ଼ିଲାନି କାହାକୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲ ତ ଏବେ ତମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରିଦିଅ କି କ'ଣ ତାମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭଲ ଯାଇ ନେଇପାରିବା କି ମତେ ଏତିକି ନେଇପାରିବ ତ ହଁ ଯଦି ସାର୍ ସେଟା ହେଇଗଲା ଛତ୍ରପୁରରେ ଅଛି ନା ଗଞ୍ଜାମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେଠି ଏଟା ଇଏ ଥିବ ନେଇକିଥିବେ ସାର୍ କମିଟି। ଆଗରୁ ଟୋଟାଲ ହଁ 46 48 ରାମସର ସାଇଟ୍ ଥିଲା ବାକି ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି 75 ରାମସର ସାଇଟ୍ ଅଛି ତ ସେ ଏଗୁଡା ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖିଦବ ଇନକ୍ରିଜ କରିଛି ଏବେ।
ना ताको देखी दो हैला से छाड़ तुम देखी देखी ताको इकोटोन हम देखी देले तो ये थला मोर आंसर तुम देखी देले इकोलॉजी बाकी तो मु तुमको एस्टुअरी वगैरह पढ़ाई देछि आगुरु ये तो तुमर एस्टुअरी जीवो से देखी देबो दैट इज फैक्चुअल आइडिया ताको देखी देबो हैला देखी देवाटा बेटर रादर देन आम माने ये डिबेट न करी तो एटा क्लियर हे जिवो ताको लिस्ट मार दबो हैला लिस्ट मार के ताको देखि देबो चेक कर दबो जोटा हो सेतरे कोन अछि हमर क्लियर हे जिवो सेतरे कोन अछि है ना एस्टुअरी एबे एस्टुअरी रो इंपोर्टेंस मु देखिबिनी तम मन देखि कि मते कहबो काली काना मते फैक्चुअल डेटा पसंद ही नु बुझि बस तो हेडे तम मन देखि कि मते कहबो एतमे मु नंबर देखेने कोन होछि ना कांसेप्ट नंबरटा पेपर तमे सेतमे मु कहि जे एबुला डेटा प्रीलिम पूर्वरु पढेबो हैला तुम कांसेप्टटा वर्ष सारा पढिबो प्रीलिम पूर्वरु एबुला डेटा कोडा कोन हैला ताको देख दो जा पे तो एस्टुअरी ऑलरेडी हमें पढ़ी सारी छे इकोटोन मध्य पढ़ी छे ट्रांजिशन जोन पढ़ी छे मैंग्रोव वेटलैंड ये सब ऑलरेडी हमें पढ़ी छे प्रोडक्टिविटी अधिक रहइबो ना इसु पढ़ीने ना को कोन कहबे तुमको पढ़ेबी की तो एस्टुअरी ऑलरेडी तुमको मेजर आउ माइनर एस्टुअरी मु तुमको 162 माइनर रिवर्स अछि तमर कहै छी बे ऑफ बंगाल रे एस्टुअरी अधिक अछि आज कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड ये सब ऑलरेडी पढ़ा सारी छी तो आपको भी मु लीव कर देली अम्बित बाबू बुझा पड़ुची तुमको यस सर सर ए